Yes, ready? Hello. Welcome back to the afternoon session on day three of the 62nd National Open Athletic Championship from the Sri Kantirava Stadium here in Bangalore. Wonderful view in the background of the skyscrapers which have arisen over the last few years. It used to be all dotted houses, one storied all round. But yes, every city in the world changes. But talking of this stadium, we have nine finals slated on the afternoon of the third day. We've had two finals in the morning, the 5,000 meters for the men and the women. Will give you the results. We were, of course, live on the AFI channel in the morning as well. The men's event was won by Murli Gawait of Gujarat, Gaurav Mathur of the SSCB, along with his compatriot Sachilal Patel, won the silver and the bronze. In the women's, Ankita of the Railways, 16 minutes 10.05, took the gold. Seema from Himachal Pradesh, 16:32.25. She added a silver to the gold which she won yesterday in the 10,000 meters, and the bronze went to Drishti. And we are now back for two events to start off with at 2:30. We just had the introduction of the pole vault for women. This is, of course, the arena outside the complex, the warm up area where we are having two of the throws, the hammer throw and the discus. The shot put is to the right of us, of your picture frame, in this stadium, and the javelin is also being held. So, two of the events out of the four inside the Sri Kantirava Stadium and two in the warm up area in the stadium complex. For the pole vault for the women, we have a starting height of 3.30, but that will come a little later because right now we are focused for the start of the hammer throw for men slated at 2:30. 12 entrants in the hammer throw. The national record in the hammer throw, Neeraj Kumar, 2016, 70.73. The meet record, Pramod Kumar Tiwari, Chennai, 70.05, 2001.
And this, of course, would be the arena where the pole vault will take place. We have 15 of the starters in the pole vault, or 15 to take the vault, as one would call it. You use the word to start would be actually the running events. So there are 15 who will vault with the pole. They'll start with 3.30 meters. The progression 3.30 plus 20 centimeters up to 3.90 and then 5 centimeters. And this is where the other event, that's the men's hammer throw, will be held with 12 participants. Muthu joins me up for the afternoon session. Muthu, 9 finals, each each very different from the other. If you look at the hammer throw, it's very different from the pole vault. And when you then flip across, you look at the long jump, which is the final for men. You have the semifinals for the 400 meters hurdles for men, the 200 meters semifinal for women, the men's high jump, that will be fascinating. The men's shot put final, which is inside the stadium, the 200 meters men, the semifinals, the women's discus, which is a huge field of 21 that will be held in the same area which you are now watching, the 200 meters event 4 in the heptathlon, the triple jump final for women, and then the 2 relays, the 4 by 400. So, packed afternoon. Good afternoon to you, Muthu. Good afternoon, Milind Bagle sir. And to start with, as hammer throw is happening just outside at the warm-up area. Inside we have pole vault women, for which the national record stands in the name of Rose Meena Pal Raj with 4.21 meters, created in 2022. And meet record stands in the name of Rosie Meena Pal Raj in the same height, that is 4.21 meters, created in 2022. 15 athletes are part of this final, and there we see the hammer thrower Ravi of Railways, who is about to take his trial, and that is Ravi. And it was Ravi of Railways had taken his first trial. .07 meters by Ravi of Railways in his first trial. As the first trial is underway, we would like to keep you informed about the results of the last edition of this championship. Nitish Punia of Services got the gold for a performance of 65.95 meters. Rahit Yadav registered 64.28 meters for silver, representing Railways. Kishore Kumar Jena of Odisha got the bronze for a performance of 62.99 meters. So, Muthu, Kishore Kumar Jena is the same boy who got a silver in the Asian Games. I thought you will say that with a lot of pride. Yes, definitely. But he, as everyone expected, none of the Asian Games medalists are available, and it is really a great pride because all along India was able to win only the shot put medal in the international arena, and it is so heartening to note that India is able to make a mark in hammer throw also.
And that is going to be Sachin Yadav of Uttar Pradesh to take his first trial. अच्छा हो गया. Sachin Yadav of Uttar Pradesh. And that's foul for Sachin Yadav in his first trial. Uh, Neeraj, The first trial is in progress at the hammer throw arena. The ladder is being moved in order to set right the net. keep the mic. Because I'll find out from the score sheet. They say best of three trials. So the hammer throw at the far end for men, 12 starters, the most complex of throwing events and probably demands more skill from the platform than any other event in the track and field program. We've got the big names or the big guns, the heavy guns in the hammer throw. And for your information, in the women's heptathlon, after two events, we get back to the pole vault for women. At the far end to the left of us, they are attempting to start off with 3.30 meters. Very interestingly, Muthu, the pole vault was first introduced in the Olympic Games in 1896. So that's how old the pole vault is. You didn't mention about the national record, Rosmina Paulraj at Bangalore on this very ground, in this very stadium where she set it into 2022, 4.21, which is also the meet record. V.S. Surekha,
who's here as a coach, uh, and she's been around looking at the pole vaulters, both men and women. And well, why am I not getting the name right? The girl who's now become a doctor, pole vaulter after Surekha. And V.S. Sureka is over here as the coach for Indian Railways team. And there we could see Babita Patel of All India Police getting ready. And she was well above the crossbar. She is successful in that 3.30 meters. And the next athlete to come up is Archana Singh, representing Uttar Pradesh. She was not able to be successful at that height of 3.30 meters. When you talk of the pole vault, the name which comes to mind in the men, Sergei Bubka, and in the women, Yelena Isanibia of Russia, a two-time Olympic gold medalist, five-time world champion, and the current world record holder, regarded as one of the greatest pole vaulters of all time in the women. And it is Archana Singh of Uttar Pradesh moving on for the second attempt, and in the second attempts too, she was not able to be successful. So the name which I was referring to, I had to scratch my head. She's a good friend, but sometimes you forget your friends' names. Khyati Wakaria is the girl who took over from V.S. Sureka. She's now an accomplished doctor, a young doctor. She gave up the sport to become a doctor, like another girl in swimming, Damini Gowda from Bangalore. Damini used to be an excellent swimmer but gave up swimming to become a doctor. She's now an intern at an hospital. So, likewise, Khyati Wakaria, who held the sway for quite some time in the women, has now become a practicing doctor. So, till joining medicine, they were able to balance studies as well as the sport. And joining medicine, definitely they would have scored high marks in their academics. Yes, Damini Gowda was there at the National Games in Rajkot last year, and she hardly had any practice opportunities because of her studies, but she did participate. I think she won a bronze medal in one of the events. But the essence is that she did participate in the national games at Rajkot. 3.30 is where they set the crossbar for the pole vault for the women. They'll increase it by 10 centimeters. That's what was decided at the technical meeting on the opening day. And then from 3.90 meters onwards, they will increase again by 5 centimeters. 15 of the athletes taking part in this pole vault final in the women's section. There is
Veronica Ilangovan of the Railways listed here, and she is India's top pole vaulters as of now. So we'll have to wait and see, get a confirmation if number 4, Veronica Ilangovan of the Railways is here. Baranika Ilangovan of Railways had won the bronze medal in the last edition of this championship for a clearance of 4.00 meters. And that was Ye Deepika of Tamil Nadu who made an attempt for 3.40 meters. I remember she was eyeing 4.30, Veronica, before the Asian Games, and thereby becoming also the first Indian to win a medal. That's what she was talking of. The pole vault, of course, traditionally dominated by the Chinese and the Japanese in the Asian arena. But Veronica, I am told, or I know for sure, is inching closer to that mark of 4.30 meters. So Baranika had won the medal in senior internationals. A beautiful clearance over there. She was well above the crossbar. And that was G. Sindhushri of Karnataka, who was so comfortable at this height of 3.40 meters. 3.30, not 4. Yeah, I would like to stand corrected. The height of the crossbar remains at 3.30 meters. The height of the crossbar at the pole vault arena is 3.30 meters. 15 of the athletes are in the competition, and as far as the last edition of this championship, it was Rosie Meena Palraj of Tamil Nadu who had created a new national record and meet record as well with a clearance of 4.21 meters in the same Conti Reva Stadium, Bengaluru. Pavitra Venkatesh of Railways won the silver medal for a clearance of 4.00 meters, and Baranika Ilangovan won the bronze for 4.00 meters. And at present, the height
remains at 3.30 meters. And it will be Babita Patel of All India Police. And that is Babita Patel. She was not able to be successful at this height. And that was a foul one. While the crossbar remains at 3.40 meters. It was foul for A. Deepika of Tamil Nadu. And it was Bhavya Jain of Madhya Pradesh who had not cleared that height. And now it will be the turn of Divya Mohan of All India Police. And even before climbing up, as she hit the crossbar, she was not able to be successful. And that was Divya Mohan of All India Police. Back again at the hammer throw arena. And it will now be the turn of Sachin Yadav of Uttar Pradesh. Sachin Yadav made a foul in the first throw, and this is the second throw what we are looking at. It is about to be measured.
58.97. 58.97 meters being scored by Sachin Yadav of Uttar Pradesh. Mohammad Tabiz of Uttar Pradesh is about to take his trial. He had made a mark of 59.03 in his first trial. Traces of hammer throwing can be made into the 18th century, where the Teletian people used to showcase their talents in front of their kings by throwing heavy stone or metallic materials being attached with a rope. Soon, the culture was developed and was transformed into a sport that was introduced in modern Olympic Games in 1900. For Mohammad Tabiz, the first throw remains at 59.03 meters and the second ended in foul. And next it will be Jaswinder Singh representing services who will be taking his turn. And as far as the hammer throw is concerned, many people also believe that the origin of this sport is from the Scottish Independence War, where King Edward I has prohibited the use of weaponry. As a result of which, this type of throwing was practiced by the army men in the late 13th or 14th century till 1995. And that was 59.62. And as far as the hammer throw, since its introduction to Olympic Games in 1900, the popularity of this sport grew ex- exponentially in different nations. Many Asian and non Asian countries participate in the sport. The countries that participate in the sport are China, Tajikistan, Uzbekistan, India, Kuwait, South Korea, etc. In 2014 Asian Games, Dilshad Nazarov of Tajikistan bagged the gold medal in men's category, and Zhang Wenzu of China bagged gold medal in the women's category. And it was Gaurav who was taking his second chance, and he made a mark of 57.35 meters in his first chance, and the second one is being measured. 61.06 by Gaurav of Haryana in his second chance. Well, as we keep on talking about hammer throw, gripping is done basically in the left hand for a left hander and in the right hand for a right hander. To protect the palms from the mechanical injuries, gloves are provided by the sporting organization. Gripping is done in between the second and third joints of the fingers. On the top of the left hand, right hand is placed. It should be placed inside the handle. And that was Neeraj Kumar
of services. And we are back again in the pole vault arena. Well, the men competitors, men finalists of long jump are being presented. And here we have V. Sriram representing Tamil Nadu, P. David from Tamil Nadu, Purushothaman of Karnataka, Srikanth of Kerala, S. Arya of Karnataka, R. Swaminathan of Tamil Nadu, Muhammad Sajid of Haryana, Nirmal Sabu of Railways, Daud Khan of Police Sports Control Board, Siddharth Naik of Services, Aditya Singh of Madhya Pradesh, Rishabh Rishivar of Uttar Pradesh. The long jump in the men's section national record stands in the name of Jeswin Aldrin with 8.42 meters created in 2023, while the meet record is in the name of M. Sri Shankar with 8.20 meters created in 2018. And as far as the long jump, Yugan Shekhar Singh of Railways won the gold for 7.59 meters in the last edition. Muhammad Azif of Kerala had won the silver, and S. Arya of Karnataka had won the bronze. And in this, S. Arya, the bronze medal winner of the last edition of this championship, is very much available. Mogle sir, now the long jump for men final is being taken up, and Jeswin Aldrin is the national record holder, while M. Sri Shankar is the meet record holder. Yeah, 8.42 is outstanding. We'll try and find out where 8.2, the mark of 8.42 was done in March 2023. So let's find out from Mr. Google about 8.42 being placed where in the world today. That's very easy to find out. But 8.42 and Murli Sri Shankar 8.20 surely is an excellent effort in the men's long jump. We are again in the hammer throw arena, and that will be the turn of Rahul Kumar of All India Police. .53.68 meters being scored in the first attempt by Rahul Kumar of All India Police, and now he's in the second one. And that is at 56.70 meters for Rahul Kumar of All India Police in his second attempt. Ajay Kumar of Haryana is about to take his third attempt. So if you look at 8.42, very interesting. Cuba's Michael Masso leads the pack. Wayne Pinnock of Jamaica is 2. And Jeswin Aldrin at 8.42 is in third position. So if the Paris Olympics were held tomorrow morning, or they were held in March 2023, then Jeswin Aldrin would have got a bronze medal at the Olympic Games. And if you look at Murli Sri Shankar, he's 13th in the world ranking, which is not bad. So the two of them are amongst the top 15 in the long jump representing India, which is outstanding. And among those two, I hope it is Murli Sri Shankar had brought many international results. Is that correct, sir? Well, it doesn't matter because at the end of the day, Jeswin Aldrin is leading with 8.42. So needless to say, he is India's top jumper
followed by a close Murli Sri Shankar. Murli Sri Shankar was here when I did the Indian Grand Prix 5, I recollect, in April, 6 months back. And he was good enough. He won the event. I don't recollect the distance that he jumped, but his presence here was an inspiration for the other long jumpers. Is in the third attempt, Taranveer Bains of services made a mark of 60.89 meters. First one foul, second at 62.31, and the third at 60.89 meters. And it is Ravi of Railways coming in now for the third attempt. So at the World Championships in Budapest, Wayne Pincock of Jamaica, 8.54 meters. Number two, Jian Wang of China, 8.34. So if uh, Aldrin was there in the World Championships, or rather he done well in the World Championship, 8.42 would have got him a silver medal. Yes, and I recollect Murli jumped 7.74, way below his best of 8.20, and he finished on 12th position in the World Championships in Budapest. and at the hammer throw arena, Chirag Yadav of Delhi is about to take his attempt. First and second was foul for Chirag Yadav of Delhi, and now he is at the third attempt. And that is 57.33 meters. With two fouls in the first two attempts, and the third one he registered 57.33 meters, and that is Chirag Yadav of Delhi. And next comes Sachin Yadav representing Uttar Pradesh. First one at foul, and in the second attempt he registered 58.97 meters. The third trial, the third attempt is underway at the hammer throw arena for the men. 60.13. 60.13 meters for Sachin Yadav of Uttar Pradesh. First one at foul, second at 58.97, and third at 60.13 meters. Now moving in for the attempt is Mohammad Tabiz of Uttar Pradesh. Mohammad Tabiz of Uttar Pradesh registered a performance of 59.03 meters in his first attempt, and the second attempt was foul. Now he is on his third. Yeah, seems to be a left-hander.
That's foul for him. .03 meters in his first attempt, second attempt, and third attempt ended in foul. Jasvinder Singh, representing services, is about to take his attempt now. He had registered a performance of 58.78 meters in his first, 59.62 meters in his second, and now he is moving on for his third attempt. And it was Jasvinder Singh of services. 58.78 meters in his first attempt, 59.62 meters in his second. And there comes Gaurav of Haryana. And that was a foul one for Jasvinder Singh. And there is Gaurav of Haryana, who had made a mark of 57.35 in his first attempt to 61.06 in his second attempt. So anything short of around 70 with the meet record as 70, anything short of 70 is a no-no for a podium finish. There are 12 of the starters there. You are again 64.58 for the athlete Gaurav from Haryana. So they seem to be getting closer, 63.42. But remember, 63 is not so close to 70. So, Yes. so if you need to be in the on the podium, then I'm not saying that it would be a national record or a meet record, but at least somewhere around 67 or 68 is what is required in a event where which is very complex. It's the most demanding of events. Probably demands more skill from the platform that you just watched in the cage. It's called the beast layer, the cage. That's the term that was coined for the hammer throw, and it of course it is said that the vision of a skilled athlete gravitating with the heavy ball, you just saw the heavy ball on the chain at the end of the length of a wire or a chain, finally to hurl it almost the length of the inside perimeter of a track. It is indeed one of the most captivating sights to be seen in an athletic arena. Yes, Milind Bagle sir, as you said, you started saying this. They will have to reach at least 70 for their podium finish. Uh, till such time, it was the high one was at 62.31 meters. After you're saying, Neeraj Kumar was able to, Gaurav was able to register 64.58, and immediately after that, Neeraj Kumar has gone to 66.39. We are now back to the long jump for men. We're talking about two of India's top long jumpers. Muthu, we've got the presence of Yuandris Betanos of Cuba. He finished fourth in the Olympic Games triple jump, not the long jump, the triple jump in Athens 2004. And he's, as we keep on saying, that there's not much of a difference between the long jump and the triple jump. The only difference being that in the triple jump, you do the hop, step, and jump. And in the long jump, you just execute what you're watching in front of you. So I'm sure
the gentleman or the boy who finished fourth in the Olympic Games, Andres Betanos of Cuba, would surely add to some of his wards who are present here. And what better than to have two Olympians here at this competition? Arnia Garcia, the 110 meters hurdle champion of 2000. He beat some of the top names in the world then: Terence Trammell, Michael Creer, Alan Johnson, Colin Jackson, and he won a gold medal for Cuba. So the Cubans have produced some wonderful athletes. Ivano Pedroso in the long jump that you're watching here, Javier Sotomayor in the men's high jump, and they have always been a threat to the United States in some of these events. Yes, that is Mohammad Sajid of Haryana who was taking his jump. Hope the first is underway in the long jump arena for men competitors. 7.10 meters being registered by Mohammad Sajid of Haryana in his first attempt. Bob Beamon, the big name of the United States, held the world record for many, many years. Mike Powell then came, and I remember Mike Powell also trained Anju Bobby George for some time in the long jump. She was India's entry at the Olympic Games in 2004, where I thought she had a huge chance to get a medal. She's now the senior vice president of the Athletic Federation of India, so augurs well for sports because I'm sure they understand Adil Sumariwala. She understands the plight of these athletes. And there is Nirmal Sabu of Railways had taken his first jump. With 12 athletes in the fray, the competition is moving on. The first attempt is underway. 7.28. That should be fairly good. 7.28. And when I mean good in the sense that you can always better 7.28, but haven't seen that spark to get closer in the long jump to the 8 meter mark. Podium finishes here in India in the long jump will perhaps come only when you are closer to the 8 meter mark. You don't need to do the 8.20 or 8.42, but surely anywhere close to 8 meters is what these jumpers need. And it was Daud Khan of All India Police. And that was a foul for him in his first attempt. We all know that in the long jump, the run up is to establish the maximum horizontal speed without inhibiting the takeoff. The speed loses at the takeoff must be kept to the minimum as the distance jumped depends largely on the run up speed, the most important factor in the long jump. So that the speed is what gets you the ultimate finish. The hitchhiking or the hitch kicking correction. The hitch kicking is the style adopted. The more you go into the air after the run up is what will get you the momentum. And there is Siddharth Naik of Services, who is about to take his first attempt. And Muthu, that's the reason why it's always said that the hitch kick or the running, running in the air technique is the most efficient action that a long jumper should possess. It's also recommended that you'll watch that hitch kick there. Does he have the big one? Yes, he's just about
I think 30 or 35% of what really is recommended. The perfection for the hitch kick might take several years. It doesn't come to you very easily. And there is, of course, no reason. 7.16 not good enough. And there's no reason why, as to why these young athletes uh, should not master the basic elements of the action in a relatively short time, provided, of course, an efficient single stride technique is established first. Yeah, and Vaglesar, as you say, if they will have to walk in the air, they will have to climb up height also. Run Not in the only, air. yes, run in the air. The climbing up is also very important. And many people are just flat towards their landing. And that was Aditya Singh of Madhya Pradesh who had taken his first attempt. So answering your question to some extent, I think being in the air, actually, or being in on the flight, as one would really say, depends on the speed that you got on your run up. If your speed is good, you will have the ability to be in the air for a longer time. If your speed is not good on the runway, it's like an aircraft. It's like an aircraft. It's like a Boeing 777 on an Airbus 380. The the speed that they accumulate is important, and that's why they call it the V1 and the V2 before takeoff. Uh, you need a momentum for the aircraft as well. You need a momentum for birds. You need a momentum for people in the long jump. Simple. Yes, it's so nice. And it is Rishivar of Uttar Pradesh moving on for his first attempt, and he was not able to be execute that jump, and that's a foul for him in his first attempt. With 12 competitors in the long jump arena, and as far as the last edition of this championship, it was Yugand Shankar Singh of Railways who got the gold for a clearance of 7.59 meters. Mohammad Asif, representing Kerala, won the silver for 7.57, while S. Arya of Karnataka won the bronze for 7.49 meters. And that is V. Sriram of Tamil Nadu moving on for his second trial, second attempt. That's a foul in the second attempt for V. Sriram of Tamil Nadu. And now it will be the turn of P. David, representing Tamil Nadu, to go for the second attempt. Amusing if you look at the boy just going off your picture frame to the right. He's wearing some sort of a dress which the monks wear. It's actually a towel. But he looks, there you are, that boy right in front crossing now. He's got a towel on. But it looks very amusing. It looks like a monk wearing a dress. I hope he wants to protect his legs also and keep the legs also warm without losing that warmness. And that was P. David of Tamil Nadu who had taken the second attempt. .79 registered by P. David of Tamil Nadu in the second. When you talk of the long jump, the takeoff is one of the most difficult phase in this particular event, as the athlete, of course, will have to execute. You watch that now. He will execute a series of complicated movements. So first the run up,
then in a fraction of a second, with the minimum loss of the horizontal speed. And that's the reason why the takeoff becomes that much more difficult. Watch him now. Yes. And at the same time, the athlete, as you just watched, has to convert his forward movement into an angular lift at the best possible takeoff angle. So after all that we said, he's committed a foul. Yes, Milind Wagleser, as you say, they lose the speed in the horizontal run as they take off. Is there any other long jumper executing in a perfect manner without losing the speed they take off? Well, the top long jumpers of the world, including two of our long jumpers, have everything with them, and that's the reason why they're amongst the top 10 or 15 long jumpers. If today uh, Jeswin Aldrin is capable of doing 8.42 meters, which is amongst the top three in the world, then the answer is obvious, isn't it? That he has got everything perfect. Now, what is perfection at the end of the day? There is nothing called perfection. You need to keep on perfecting yourself. Yes, and that is KM Srikanth of Kerala. Muthu, I'm sure both Murli Shankar and Aldrin, I must be saying, we need to better our own mark of 8.42 and 8.20. So there's nothing called perfection. You never believe in the having reached a pinnacle in any walk of life. Do I believe that I'm perfect? No, I don't. I learn from you, and you learn from me. We all learn from each other. So the long jumpers, answering your question, yes, perfection, but improve that perfection to become more perfect. Yes, yes, Wagleser, as you rightly had put up, every moment of life makes us to learn something new. And that was, yes, Arya, the winner of the bronze medal of the last edition. And he's a local boy representing Karnataka. .61 meters registered by Arya. When we look into his bronze medal winning performance last year, it was at 7.49, and now he had made a mark of 7.61. The first one was at 7.09. And the next attempt will be taken up by R. Swaminathan representing Tamil Nadu. R. Swaminathan made a foul in his first attempt. Now he is moving for his second one. That looks good. The white flag has gone up, so that looks good, Muthu. I'm sure Yes. the foul has not deterred him. You know, sometimes you commit a foul and things start going wrong for you. But he's done well on this attempt. Looked good. 7.56. So he's close. He's Yes. very close now. That's Swaminathan. From Tamil Nadu. He doesn't feature in the top leading athletes of this year, or does he? Swaminathan, yes, he is amongst the top. Correction. 2021 Open National Champion. So his best is 7.78. He just did 7.56, didn't he? So he's capable of doing 7.78. Yeah, probably he'll be going much more longer distance in the next one because the first one got registered foul for him. In, He had to secure his position first. That might have reduced the speed we can expect in the next attempt. Incidentally, although the meet record is 8.20 of Murli Sri Shankar, he has got 8.41. So my apologies, Murli, to you.
Murli Sri Shankar. Jaswan Aldrin 8.42 in 2023 and Murli Sri Shankar 8.41. So I need to take my word back that his best was 8.20. So look at the competition, Muthu. 8.42 Jaswan Aldrin, 8.41 Sri Shankar. After that, it's 8.19 Ankit Sharma. Is he listed here? Ankit Sharma is not here. He's not here. Mohammad Anis is the fourth leader of all time. Prem Kumar, but we have the some of them, but they're all in the 7.77, 7.80, 8.05. You got P. David who's got 8.05. That's his personal best. So he's the only one in the pack here today who's got 8.05. All the others are hovering around the 7.9 type mark. Yeah, that P. David? 7.47 for Nirmal Sabu of Railways in his So second. so when bib number 1064 comes there, just make sure that you concentrate because he's the only one who's got 8.05 in the pack out here today. And that's going to be the turn of Daud Khan of All India Police. And Daud Khan happens to be Indian Police competition bronze medalist this year with his personal best at 7.41 meters. And that was the foul one for Daud Khan in the second also. He registered a foul in the first and second also. And that will be Siddharth Mohan Naik representing services, 2017 Asian Championship participant, current year inter-services champion. Siddharth Naik, having registered 7.16 meters in his first attempt, is about to move for his second one. Siddharth Naik of services, inter-services champion. .16 registered in his first attempt. Now it is 7.15. 7.15 for Siddharth Naik of services. Aditya Singh of Madhya Pradesh is about to move on. P. David of Tamil Nadu is in the 2023 topping list. And among the available long jumpers, he is ranked number 1. First one, Jaswin Aldrin at 8.42 meters. M. Sri Shankar at 8.41 meters. And that was a foul for Siddharth Naik. No, that for Aditya Singh, that was a foul. And as far as the top list for the current year is concerned, Ilakya Dasan stands at 8.09 and P. David, who is
competing in this championship remains at 8.05 meters. Mohammed, the other top listed athletes are not available in this championship. Of course, R. Swaminathan is over there, and that is Rishivar of Uttar Pradesh, who had taken his second attempt. He had made a foul in his first attempt, and this is the second one. And after P. David, Rishivar is available with 7.77 being the best this year, and that is 7.09 meters registered by Rishivar of Uttar Pradesh. And now we are moving on for the third trial. V. Sriram of Tamil Nadu is about to take his third attempt. V. Sriram, having registered a foul in his first, 7.09 meters in his second, is about to take his third one. And that appears to be a good jump. V. Sriram. 7.49 meters for V. Sriram in his second attempt. First one is at 7.09 meters, second one at 7.49. And next, it will be P. David. P. David ranked fourth as far as the topping list for the current year is concerned. The other three are not available. Jisvinaldin, Sri Shankar, and Ilakya Dasan are not available for this event. P. David is the person who is available, and P. David made a mark of 7.78 meters in his first one and 6.79 in his second one, and that is P. David representing Tamil Nadu. Muthu, 7.78 should get him a medal. A gold, perhaps, because I don't recollect anyone doing anything over 7.78. But with three more jumps remaining for him, I'm fairly certain that he would attempt 8 meters. Yes. Another athlete so far who is close to is R. Swaminathan of Tamil Nadu with 7.56. Yes, Arya of Karnataka is with 7.61. Yes, Arya is the bronze medal winner of the last edition. He is with 7.61, and he is supposed to be the closest one to P. David. Now, watch the takeoff action about which we've been talking for a long time. Watch it divided into 3 phases: the planning of the takeoff, or the planting of the takeoff on the foot, the absorption of the impact. Now, look at that. The absorption of the impact and the lifting off from the board. Yes, Vaglesar, you're right. As that Purushottaman of Karnataka was moving on, while stamping the takeoff board, his speed is getting reduced, and probably that will not make him to sail for a longer distance. 7.37. So after 2 foul attempts or 2 fouls, you don't attempt a foul, do you? So after 2 fouls, he's got 7.37. He's been struggling. You know, they say not a great day at office today. So we all have a bad day at office. You need to make sure that that bad day is converted into a positive day. And now it will be the turn of K.M. Srikanth of Kerala.
And while watching this game, Srikanth of Kerala, he was able to run in the air, but not to a greater extent. As you say, if he would have got a high speed, that would have made him to run more in the air. 7.33 meters for KM Srikanth. First two being the foul. 7.33 is registered in his third attempt. And there comes Arya, who is next to David as of now with 7.61 meters in his second attempt. Yes, Arya of Karnataka, the bronze medal winner of the last edition. A good jump over there. Ended in foul. First 7.09 registered in his first attempt, 7.61 in the third, and the foul in the third one. And next comes R. Swaminathan, another athlete who is somewhat closer to P. David. That is after Rezaria, with a performance of 7.56 meters in his second attempt. And that is R. Swaminathan of Tamil Nadu, who had registered foul in his first attempt, 7.56 in the second attempt. Presently, he is at the third position. P. David of Tamil Nadu in the first position, S. Arya of Karnataka in the second, and it is Swaminathan of Tamil Nadu who is in the third at present. And that's a foul for Swaminathan in his third attempt. Muthu, most of these long jumpers are now doing that 7.6 to 7.9, going to 8 meters. But if you look at the world progression, and way back in 1901, Peter O'Connor of Ireland had jumped 7.61 meters. So today he wouldn't even have been amongst the top among the long jumpers in India, leave alone the world. And then, as the IAF, of course, considered the marks set at a high altitude as acceptable for a record consideration, figures started mounting. 8.35 Ralph Boston of the United States in 65, and I'm not going to read out all the names because 65 Ralph Boston, you had France, Yugoslavia, the USA. The US dominated it till Mike Powell 8.95 jumped 29 feet 4 1/4 of an inch in Tokyo on the 30th of August 1991. So that's the way the long jumps have progressed. 8.95 Mike Powell of the United States in Tokyo, Japan in 1991. And that was a good jump by Mohammad Sazid of Haryana to make a mark of 7.53 meters, and presently he is standing at the fourth position. And Vaglezar, you were telling that it had been accepted that performing at the high altitude was acceptable. Why it was not acceptable prior to that, sir? Is there any idea about that? Well, honestly, I don't. I'm very honest in admitting that I'm not sure of why they didn't do that, but it was accepted. Uh, it should have been the other way around because remember, at the high altitude, it's much more difficult to do that. So when Bob Beamon achieved that at Mexico City at the high altitude, not many believed that he had achieved that world record, which stood again for a long time till Mike Powell broke the record 8.95 1991.
Sir, in the meantime, Nirmal Sabu of Railways had registered 7.60 meters, and now he is ranked third as far as the jumps. P. David with 7.78, followed by S. Arya of Karnataka with 7.61, and now it is Nirmal Sabu of Railways for 7.60 meters, But the third. since we mentioned about the high altitude, by jumping 8.90 in Mexico City, he broke the existing record by a margin of 55 centimeters. 55 centimeters, 21 or 25 centimeters, which is 21 3/4 of an inch. That's massive. Records are broken only by centimeters, and here he broke the record 21 3/4 of an inch, and the record stood for 23 years till it was broken in 1991 by Mike Powell, which is still the Olympic record and the second longest wind legal jump in the history of the long jump. So 23 years maintaining that record was so nice, and it had been broken. And now it is Siddharth Naik of Services who is about to take his third attempt. And all these athletes we've been reading about Neeraj Chopra, talking about the Loris ambassadors today. They all want to do something for the youth, and I remember Bob Beeman had worked in a variety of roles to promote youth athleticism, including collaborations with former California Governor Arnold Schwarzenegger and Beeman's, of course, athletic programs at various universities. He was also a graphic artist and established the art of the Olympians. So they all want to do something or the other and contribute to society and the world, the youth of the world. And that was the third attempt for Siddharth Naik of Services. He had registered 7.57. And another athlete coming up, 7.78 by P. David of Tamil Nadu, following that 7.61 by S. Arya of Karnataka, and after that Nirmal Sabu with 7.60. Nirmal Sabu representing Railways, and now it is 7.57 by Siddharth Naik of Services. And that's going to be Aditya Singh of Madhya Pradesh to take the third attempt. 7.63. Yeah, he should be lucky because first two ended in foul. The third attempt brought him 7.63 meters, and that is Aditya Singh of Madhya Pradesh. And the next athlete to take up the trial is 1102 Rishivar of Uttar Pradesh. Rishabh Rishivar, 2018 National Junior Champion, 2023 Inter-University Champion, having the personal best at 7.77, is moving on now. Here he had made only a mark of 7.09 so far. .43 registered by Rishabh Rishivar of Uttar Pradesh in his third attempt.
And as the 3 attempts are over, they'll be working out on the order in which the next jumps will be taken up. And we are back again at the hammer throw arena. And there is 825 Praveen Kumar representing All India Police. He made a performance of 59.27 in his first attempt, 60.33 meters in second, 59.58 in the third, and the performance indicator board says it is the final attempt, that is at 60.83 meters. And next comes Gaurav. Gaurav of Haryana is about to take his attempt. His first 3 attempts are at 57.35 meters, 61.06 meters, 64.58 meters. White flag raised, that is about to be measured. And now it is the turn of Ajay Kumar of Haryana. Ajay Kumar of Haryana had registered a foul in his first attempt, 62.31 meters in his second, 60.89 meters in his third. We have Aryan Patil And now the representing Odisha. finalists of high jump in the men's section are being presented. Bharati Vishwanathan of Services, Adarsh Ram of Railways, Gurjit Singh of All India Police, Kaustubha Jaiswal of ONGC, Aryan Patil of Maharashtra, Swadan Kumar Maji of Odisha, Piyush Panwar of Railways, M. Santosh of Services, Mohammad Ali of West Bengal, Jesse Sandesh of Railways, Chetan Balasubramanya of Services, Dilshit of Kerala, Uchal Roy of ONGC, Jamun Joy of Kerala, and Sheikh Mohideen of Andhra Pradesh. And as far as the high jump is concerned, we have Tejashwini Shankar's name in the national record at 2.29 meters, created in 2018, while the meet record is in the name of Sarvesh Anil Kushare at 2.26 meters, created in 2019. Chetan Balasubramaniam with bib number 1002, 2013 World University Games participant and 2022 Indian Open Jumps champion, is very much available. And we do have another big name, Jesse Sandesh. And back to the hammer throw arena. The sixth and the final throw is underway. And who is about to take the final throw is Taranveer Bains of Services.
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। So we'll move from the hammer throw to the 200 meters for men, which is at the far end of the spectrum. And the first of them is Harpreet Gill of Punjab. Akshay Nain is in lane 2. Lane 3 is Animesh Kujur of Odisha. Lane 4 is Jishnu Prasad of Kerala. In lane 5 is Govind Kumar. Lane 6 is Vignesh of Madhya Pradesh. Ragul Kumar, Tamil Nadu in 7. And Tirthesh Shetty of Karnataka in 200 meters. So the first of the heats, I'm of course, while the 200 meters is on, I'm joined here by someone who's been a very popular figure with us on television over the years, Shakti Singh. And Shakti, of course, we'll talk to him when the shot put is on. Not that I can't talk to him about the runs. Welcome here to our Combox, Shakti ji. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू अगले साहब। शक्ति, जब 200 मीटर हम देखते हैं, आपका तो इवेंट डिस्कस और शॉर्ट था, लेकिन जब आप ये 200 मीटर्स की जब आप देखते हैं तो आपने जो 2 ओलंपिक्स में पार्ट लिया था, तब कैसे लगा जब आपने 100 मीटर्स, 200 मीटर, बाकी की जो इवेंट्स आपने देखे? सर मैं जो है ये स्प्रिंट्स इवेंट भी देखता हूँ, तो ये 96 अटलांटा ओलंपिक का जो है 96 अटलांटा ओलंपिक के अंदर जॉनसन ने जब 200 मीटर लगाया और वो 19 उसने उस टाइम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, तो मैंने बिल्कुल ग्राउंड में बैठ के वो सारा इवेंट देखा और मुझे बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगा कि देखो किस ढंग से बंदा जो है अपना स्प्रिंट्स लगाता है, और उसकी स्टाइल भी जो रनिंग की जो स्टाइल थी वो भी उनकी अलग थी। तो और 100 मीटर 200 मीटर ये तो एक मतलब थोड़ा सा एक रोमांचक इवेंट्स होते हैं। आजकल तो 800 मीटर तक रोमांचक हो गया है, वैसे 1500 मीटर भी हो गया है, स्प्रिंट्स इवेंट्स हो गए हैं वैसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्प्रिंट्स इवेंट्स देखना। आप 5000 और 10,000 मीटर के लोग को नाराज कर रहे हैं? नहीं नाराज नहीं, वो मतलब मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हैं ना, मैं स्प्रिंट्स की बात कर रहा था। आपने अभी माइकल जॉनसन का नाम लिया, इवेंट शुरू होने जा रही है। ऐसा एक हस्ती है जिसने 200 और 400 मीटर के गोल्ड मेडल लेके एक इतिहास रचाया था। जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत लेकिन सर उसकी एक रनिंग स्टाइल भी अगर आप देखें तो उनकी रनिंग स्टाइल जो थी वो बिल्कुल और एथलीट से बिल्कुल डिफरेंट थी। Yes, so the stage is set for the first of the semifinals, Heat 1. Amlan Borgoin of Assam, the national record 20.52 in 2022. He also holds the meet record of 20.75. They're on the blocks now. Lane 1 Harpreet, lane 2 Akshay, lane 3 Animesh, lane 4 Jishnu, Govind in 5, Vignesh in 6, Ragul in 7 and Shetty in 8. The semi-final of the men's 200 meters. Round the bend, then into the home straight, the final 100 meters, 2 to qualify, and then the 2 best losers. कोई भी नहीं चाहता कि मैं 2 बेस्ट लूजर से आ जाऊं, डायरेक्ट 2 करूं, तो बिल्कुल हर एथलीट जो है यही चाहता है कि क्योंकि उसके अंदर रिस्क होता है, लूजर के अंदर रिस्क होता है, तो हर एथलीट अपना पूरा जोर लगाता है कि वो बिल्कुल प्रॉपर क्वालिफाई किए। So there you are on their blocks. Remember, one false start, and we don't want a false start. Yes, sir. Be careful. Yes, be careful. You practice for weeks. Oh, there you are. Oh. There you are. Has he
was that the gun or was that a fault in the outside? Tirthesh Shetty of Karnataka. ये शायद गन का फॉल्ट था, कई बार हो जाता है सर ऐसे। कल जब हमने या परसों जब हमने 100 मीटर्स में नेशनल रिकॉर्ड देखा 10.23 का, तो कल जो सर्विसेज के जो कोच थे, उनके कंडीशनिंग कोच थे, उनको थोड़ा सा डर था कि कहीं इतने करने के बाद एक फॉल्स स्टार्ट ना हो। तो वो तो बिल्कुल 100 मीटर का तो ऐसा होता है सर, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि एक बार जब आप हल्का सा आगे निकल गए, फाउल हो गए, तो बस खत्म कहानी। तो इसलिए ये इवेंट्स जो है बहुत केयरफुल करने के हैं, जिसमें मतलब ब्लॉक स्टार्ट है। दुनिया के बेस्ट रनर्स को फॉल्स स्टार्ट की वजह से आप ये देखो ना, एक बार ये टिम मॉन्टगोमरी, टिम मॉन्टगोमरी को उसको भी हुआ, और एक बार जो इंग्लैंड का एक एथलीट था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो ये पक्का है कि उसकी फॉल्स स्टार्ट थी, क्योंकि 8 नंबर 8। हाँ, इसका मतलब कि ये तो गन का फॉल्ट नहीं था। तो ये tirthesh Shetty is out. यस, We now have lane 1 to 7 occupied. This is clear now. This is clear. The runners in the inside slightly hesitant. They're now going strong in the inside. In lane 3, it is Animesh Kujur of Odisha. Services strong in lane 2, Akshay Nayan. But it is lane 3. It is all, look at him taking it. 200 मीटर में शक्ति जी जिस आसानी से जो लेन 3 मेरे हिसाब से अनिमेश कुजूर उड़ीसा के थे, तो अच्छी शुरुआत थी वहाँ पर। जब लेन 2 में अक्षय नयन सर्विसेज के साथ में थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, मैं आगे चला जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बहुत ठीक हैं। और ये जो है विद कंफर्टेबल जो है उन्होंने अपना जगह बनाई है। तो द रिजल्ट्स थे अनिमेश कुमार 20.93, नंबर 2 अक्षय नयन SSCB 21.27, Rahul Kumar 21.59. Like Shakti just mentioned that 21.59 रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि मैं दो बेस्ट लूजर्स में हूं क्या नहीं। यहाँ रिस्क हो जाता है, और रिस्क है, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो चांस ना लो। As we now move to this was of course the slow-mo of the earlier one, where lane 8 was vacant. At this point of time, it was the inside very strong, both 1, 2 and 3. In fact, one was lagging behind, and it's here Shakti ji ki ये दोनों साथ। ऐसा लग रहा था कि सर्विसेज का अक्षय शायद पिछाड़ देगा, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर 100 मीटर तक ऐसे ही था, लेकिन ये जो लास्ट के अंदर जो है इसने अपना स्पीड को, मूवमेंट को तेज किया और इनके आगे फिनिश किया। अक्षय का शायद वही he had that intention कि मैं 2 भी आऊं तो क्वालिफाई कर लेता हूं। बट नेवरदलेस साइकोलॉजिकल जब होता है कि आपका टाइमिंग अच्छा हो, आप पहले आ जाओ, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है कि एक खिलाड़ी को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है एक रेस के बाद। We will talk to Shakti Singh of the discus and the short put. The short put will start. The players will be introduced to the far right. That's his event. And it was a wonderful sight to see his nephew yesterday winning a gold medal in the discus throw. Nirbhay Singh. Young lad, doesn't speak much like Shakti. वो बहुत शाई है सर। मैंने उसको कहा कि मैं आपको वहां पर मिलाता हूँ आपको, वो बोलता है नहीं, मैं जो ज्यादा मिलने में वो नहीं करता। So we are now coming up to the second heat of the 200 meters. Balakrishna of Karnataka in 1, Harmanpreet Singh of Punjab in 2, Abhin Devdigya of ONGC in 3, Shubham of Haryana in 4, Shashikant Angadi of Railways in 5, Jai Shah of Maharashtra in 6, Love Singh of SSCB in 7, and Tamil Arsu of Tamil Nadu in 8. They on the blocks. सर्विसेज के 3 रनर्स है तीनों हीट में। उनके जो तीसरे हीट में संदीप सिंह है, उनके ऊपर काफ़ी आशा है। असल में सर्विसेज की टीम, रेलवे की टीम, ये 2 ही टीमें ऐसी हैं जिनका कंपटीशन होता है। और सर्विसेज के पास तो जो है वो सर्विसेज का तो ये है सर कि ये सर्विसेज के लोग जो है एथलीट को बनाते हैं,
और इनके इनके पास जो है वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है. We'll talk about the raw material. Obviously, Shakti has been a member of the railway team for many, many years. The railways, the pride of our nation in sports, and the wonderful train journeys that we have. But on their blocks now, Balakrishnan 1, Harmanpreet 2, Abin 3, Shubham 4, Shashikant 5, Jay 6, clean start. No, once again, pressure, Shakti ji. यस यस, प्रेशर होता है ना सर इसमें. हर एथलीट वही. Now look, was it 7? Was it 7? यस यस यस, आई थिंक सो. शक्ति, जब हम ये 200 मीटर देख रहे हैं और 100 या इवेंट्स है, जो रनिंग इवेंट्स है, उसमें हम फॉल स्टार्ट की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, थ्रोअर्स को थोड़ा सा एडवांटेज है? कोई ऐसा नहीं है, या वहाँ भी कुछ नहीं सर, उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको मतलब 3 थ्रो में आपको क्वालिफाई करना है, तो आपके पास एटलीस्ट 3 चांस होते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर भी लकीली अगर मतलब लक ठीक नहीं है तो तीनों के 3 थ्रो भी फाउल हो जाते हैं. लेकिन उसमें चांस ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बस स्टेट में आने के लिए आपको 3 चांस हैं, तो उसमें आप सेफ हैं. हम बात करेंगे जब शॉर्टपट शुरू होगा कि आपके टाइम से और आज शॉर्ट और डिस्कस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या तरक्की हुई है, वो बाद में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल आपसे 200 की बात करने में भी मज़ा आ रही है. नहीं सर, एथलेटिक्स के अंदर तो मैं एथलेटिक्स कोच भी हूँ. अभी मैं एनसीयूई का चीफ कोच हूँ नाइस पटियाला के अंदर. तो मैं सारे इवेंट्स को देखता हूँ, तो नज़दीक से जब सारे इवेंट्स आप देखते हैं और जब कोचिंग फील्ड में आ जाते हैं तो तकरीबन हर इवेंट को आप टच करते हैं. पैशन, जो Yes, हम बोलते हैं ना, पैशन होनी Yes, चाहिए. yes. लेन 3 खाली लग रही है, तो लेन 3 में अबिन देवरजिया ऑफ ONGC, उनको रेड कार्ड बता के ही इज आउट. So lane 3 is vacant. The lineup once again: Balakrishnan of Karnataka in 1, Harmanpreet Singh of Punjab in 2. Lane 3 is vacant. 4 is Shubham of Haryana. Shashikant Angadi of the Railways is in 5. Jai Shah of Maharashtra is in 6. Love Singh of the SCB is in 7. And Tamil Arasu of Tamil Nadu is in 8. आज तो 10 लेन भी शुरू हो गई है इंटरनेशनली. यस सर, क्योंकि अभी तो चेंज हो गया ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है धीरे धीरे. क्योंकि जब तक ये चेंज नहीं होगा तो लोगों में इंटरेस्ट भी नहीं बनता है सर. बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट. अब ये जैसे मिक्स रिले हो गया है, बिल्कुल, वो भी एक मतलब जो है इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही था उसका. अब जैसे वॉकिंग का भी हो गया ऐसे, तो ये 2 इवेंट्स ऐसे हो गए, ऐसे धीरे धीरे ये इंटरेस्ट भी बनेगा और लोग इसको ज़्यादा भी देखेंगे उसमें. और मिक्स स्विमिंग में भी आ गया. यस यस, हाँ. तो इनोवेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे. यस सर. जब तक आप इनोवेट नहीं करेंगे तो लोग जो आते हैं देखने के लिए. अब आप ये देखिए वागले साहब की जो रिले है हमारी, किसी भी, we'll talk about that as they are on their blocks now. The standard: on your marks, set and go. This is clean now. Lane 3 vacant. Watch out for the inside once again. Strong is the boy from Haryana, Shubham. Now coming into the final straight. This is close. This is going to be very, very close. This is a beauty. Look at lane 4, 5 and 6. oh very good, tough competition. Very good. Yes. I suspect it's Shubham, Shashikant, Angadi and Jaisha. अगर ऐसे क्लोज फिनिशेस हो तो फिर खतरा हो जाता है उसका, जो लूजर जो ये देखता है कि हाँ मेरे चांस बढ़ जाएंगे. बिल्कुल. This also means that इस हीट में this is a nice start after that hiccup of a false start. 4, 5 and 6 at this point of time. 4 is struggling a wee bit. 4 is in front. In fact, 5 is struggling. यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 जो
शशिकांत अंगाड़ी है रेलवेज के, आपके शिष्य शायद होंगे। यस तो 4, 5 और 6 ने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया, बट इतना क्लोज है मेरे ख्याल से कि टाइमिंग आने में थोड़ी देर लग रही है। यस सर, शायद फोटो फिनिश हो, क्योंकि तीनों ने करीब करीब नजदीक से ही क्वालिफाई फिनिश किया है। और ये वेट मुझे याद है शक्ति, इसी ग्राउंड पे जब 100 मीटर्स की फाइनल हुई थी नेशनल गेम्स में, देयर यू आर जय शाह ऑफ महाराष्ट्र, ही वाज ड्रॉन इन लेन 6 21.47, और देख लो शशिकांत 21.47, यस बहुत कम ऐसे देखने मिलता है, और शुभम 21.54, सो 21.47 दोनों ने किया है। इसका मतलब, और इसके 21.54 है। जो पहले दो हीट में जो जिनके तीसरा या चौथा टाइमिंग था, उनको अब लग रहा होगा चलो हम घर चले जाते हैं। यस यस यस, ये इसीलिए तो थोड़ा सा उसमें वो खिलाड़ी के अंदर जो है ना ये रहता है कि भाई फाउल स्टार्ट भी इसीलिए होता है, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि इसमें अगर प्रॉपर स्टार्ट मिल जाए तो उसको एडवांटेज मिलता है फिर। We now going to heat number 3 of the 200 meters for men. A reminder, we are watching live action on the Athletic Federation of India's channel. ये लाइव टेलीकास्ट जो हमने काफ़ी महीने से या साल से शुरू किया है AFI ने, काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। बहुत अच्छा है सर, ये तो मतलब जो है स्पोर्ट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत होता है, क्योंकि इससे बहुत से बच्चे जो है जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वो जो आ नहीं पा रहे वो भी इस चीज़ को लाइव देखते हैं, तो उसमें मोटिवेशन मिलता है बच्चे को बहुत ज़्यादा। और मैं आपको जो रिले की बता रहा था ना सिर्फ बीच में, क्योंकि रिले अगर जहाँ भी रिले होती है तो सारे की सारी टीमों का इंटरेस्ट हो जाता है, इसीलिए ये जो मिक्स रिले है, मिक्स वॉकिंग है, वो काफ़ी इंटरेस्ट बन जाता है इससे। Absolutely. So the lineup in Heat 3 is Saurav Saha of Police in 1, Paras of Himachal in 2, Srinivas of Railways in 3, Lakshay of ONGC in 4, Sandip SSCB in 5, Tushar Manna Delhi 6, Vishal Tamil Nadu 7, and Sajan Mishra Madhya Pradesh 8. We've had a false start in the first two heats. Not here, everything going to clockwork. It's the same pattern once again as they come to the bend. Number 5 looks strong. Sandip, जिसकी बात की थी हमने, 4 is strong as well. Sandip being pushed. So too is Srinivas pushing them. Sandip is now pushing lane 4, but he's happy. He's happy. So lane 5 was Sandip. Lane 4 was Lakshay. And services, as Shakti has been saying, they have so much of bench strength. Lakshay there 21.25, so अच्छी टाइमिंग आई है। ये बहुत अच्छा, फर्स्ट सेकंड बहुत शानदार। 21.28 for Sandeep Singh and Srinivas, or not, that's not a great time, 21.50. So 3 heats over, 2 qualifying with 2 best losers. हम बात कर रहे थे रिलेस, जो फॉल स्टार्ट की बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे रिलेस के बारे में। जी जी जी। ऐसी इवेंट है जहाँ वर्ल्ड लेवल पे मैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करना चाहूँगा कि उनके जो रनर्स है 1 2 3 4 शायद दुनिया के बेस्ट रनर्स। जी जी। लेकिन अगर आपने इतिहास देखेंगे रिले के गए 10 साल में, हर अमेरिकन टीम या करीबन बहुत से अमेरिकन टीम्स बेटिंग एक्सचेंज की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई है। चार अच्छे रनर्स जिनकी टाइमिंग्स वर्ल्ड की 1 2 3 4 हो सकती है, जब हालांकि उस जमैका आ गया, हुसैन बोल्ट आ गया, लेकिन इतने होने के बावजूद अमेरिका के टॉप 4 रनर्स बेटिंग एक्सचेंज फॉल्टी। क्या हो सकता है? ईगो है? नहीं, ईगो भी नहीं कह सकते हम इसमें, अगले साहब ये कह सकते। देखो, ईगो नहीं हो सकता है क्योंकि आपको भी तो गोल्ड मेडल जीतना है। यस, गोल्ड मेडल आपको भी चाहिए। वो तो मतलब जो है वो स्पीड का जो मोमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अब आपको याद भी होगा शायद 82 एशियन गेम्स का, 82 हमारा जब एशियन गेम्स हुआ था, तो हमारी जो 4x4 की जो टीम थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, और उसको मतलब मेरे अभी भी ध्यान में है कि वो टीवी पर नया जब आता था तो वो बैटन कैसे गिरा, और हमारे एथलीट इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हम मेडल गोल्ड भी ले सकते थे वहाँ, और चांस गोल्ड का ही था। तो रिले टीम का बड़ा इंटरेस्ट होता है सर। Now we're coming to the event which
Shakti would be very happy to talk Yes. to us. I can see the big smile on his face. We'll introduce the athletes there for you in the short put. A total of 12 starters in the short put. The big men, as we call them. यस सर. इनको देख के कभी कभी डर लगता है. नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं So सर. Abhilash Saxena Railways. Shakti will of course talk about him later. Sahib Singh ONGC, Jaspal Punjab, Shivam Chaudhary Uttar Pradesh, Parth Lakra Delhi, Praveen Dahya SSCB, Ashish Kumar Haryana, नरेश एंटिल एसएससीबी. एंटिल एक नाम, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ. सीमा एंटिल. यस यस यस. मनप्रीत सिंह पंजाब, नवीन ऑफ एसएससीबी एंड आशीष बलोतिया. और हम बात करेंगे तेजिंदर सिंह तूर की, जिनका रिकॉर्ड है भुवनेश्वर 21.77. आपका रिकॉर्ड मैं बहुत साल से देख रहा था. और तेजिंदर पाल सिंह का रांची में मीट रिकॉर्ड है 20.32. ये इवेंट में क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत दर्शनीय है. पेरी ओब्रायन की स्टाइल आ गई बाद में, लेकिन अगर आप ओलंपिक्स का जो स्टैच्यू है वो देखेंगे, वो थ्रो का है. जी जी. जो 320 BC ओलंपिया में हुए थे, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. यस यस. तो शॉर्ट पट तब मैंने सुना है कि पत्थर से फेंकते थे. यस सर. तो इसमें क्या ऐसी खूबी है शॉर्ट पट में? देखो सर, शॉर्ट पुट एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर आप मीट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो एथलीट है वो शॉर्ट पुट को बोलते हैं. अब जैसे मान लो कोई बच्चा नेशनल में फर्स्ट आता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट ऑफ द मीट. जैसे आप 100 मीटर को कहेंगे फास्टेस्ट एथलीट ऑफ द मीट. तो जो एथलीट शॉर्ट पुट का है उसके अंदर वागले साहब ये सारी एबिलिटीज होनी जरूरी है. आप जैसे स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे की सारी चीज़ें वैसे तो हर एथलीट में होनी चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट पुटर है उसके अंदर ये सारे की सारी चीज़ें होंगी. और एक स्ट्रेंथ का जो लेवल होता है वो सारी एबिलिटी के साथ सबसे स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द मीट बोला जाता है. It will take a little time for the short put to start. They were just introduced. So हम अब चलते हैं लॉन्ग जंप पे 7.56. शक्ति, अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो दो नाम जो अब उभरे हैं, हालांकि हम लेडीज में कैसे भूल सकते हैं, जो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एएफआई की, Yes, yes, yes. अंजू अंजू बॉबी बॉबी, जॉर्ज. yes, yes, yes. मुझे तो आशा थी, मैं एथेंस में था, मुझे आशा थी कि उसे पोडियम तो मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती मेरे ख्याल से उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. मुझे अभी भी याद है कि जब वो रेडी थी तब उन्होंने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मेडल प्रेजेंट सेरेमनी अनाउंस की, और शायद वो कंसंट्रेशन उसका हट गया था. यस यस. ये शायद शुरू हो गया शॉर्ट पुट. तो जो टेक्निक पेरी ओब्रायन से शुरू हो गई है और अब आई है, शॉर्टपुट में क्या तरक्की हुई है? मैं तो तरक्की कहूँगा, कभी किसी भी स्पोर्ट्स में नीचे तो कभी आया ही नहीं. स्पोर्ट अच्छी होते जा गया है. असल में सर क्या है कि जो थ्रोज है, स्पेशली मैं शॉर्ट पुट की बात करूंगा, ये जो डिस्को पुट का जो इवेंट है, जो डिस्को पुट स्टाइल से जो फेंकते हैं, इसके अंदर रोटेटरी फोर्स ज़्यादा यूज होती है. और जिस एथलीट के अंदर मतलब जैसे मैंने आपको बताया सारी एबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो उसमें वो जो है अपनी उस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए, और इसमें स्ट्रेंथ के साथ में अगर स्पीड है तो वो बच्चा ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को फेंकता है, और एक ही इंटरेस्टिंग भी बनती है. अब जैसे आप ग्लाइड से थ्रो करेंगे और डिस्को पुट से घूम के करेंगे, तो घूम के करने से बच्चे को भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, क्योंकि उसकी बॉडी सर्कल के अंदर रोटेट करती है. जबकि पैरा ओब्रायन में सीधा ही आप फेंकते हैं, और पैरा ओब्रायन के लिए हाइट ज़्यादा चाहिए, और डिस्को पुट के लिए अगर आप 6 फुट 3-4 इंच का एथलीट है तो वो वर्ल्ड लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है. अब जैसे तेजिंदर सिंह तूर है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, मैं तो ये बोलता हूँ कि वर्ल्ड लेवल की परफॉर्मेंस है. वेरी गुड. 21.77 इट्स ए वेरी गुड रिजल्ट. और आगे आने वाला जो ओलंपिक्स है उसमें हम कोशिश, और उसकी भी यही कोशिश है कि वो मतलब ओलंपिक्स में कोई अच्छा प्रदर्शन करे, और वो करेगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा अभी दम है. क्योंकि मैं तो वहीं पटियाला में रहता हूँ, तो मेरी उससे चर्चा भी होती रहती है, तो उसके अंदर है कि मैं ओलंपिक में कुछ करूँ, क्योंकि वो ओलंपिक के नज़दीक है. तो यही बताया जाता है कि इस देश में हम
और गर्व से बात करते हैं एज वी वॉच जसपाल. जसपाल इज representing the Punjab state. There are 3 from the services, there are 2 from ONGC, and then of course there is Haryana, the railways. तो अगर आप ये लिस्ट देखेंगे शॉर्टपट में 12 की जो है उसमें रेलवेज की 2 है, एसएससीबी के 3 है, हरियाणा के का 1 है, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 2 है. तो ये जो हम हमेशा कहते हैं कि we now here at the 200 meters for women, the semifinals, the 200 meters, the semifinal for women. तो कहाँ से शुरू की उसने? We have time for the short put, so perhaps we have time for the short put, so we will go across to the 200 meters for women. 26.16 for Akshata, 26.50 for Deepika, and Nimi VO 27.24. This is the semi-final of the 200 meters for women. और मैं हमेशा कहते हैं कि एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है जो एक वक्त पे 3 या 4 इवेंट साइमल्टेनियसली चलती है. मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. और चारों इवेंट्स अलग ढंग के होते हैं. अलग ढंग के होते हैं. दर्शक जो है, जो शॉर्ट पुटर है, वो चाहता है कि मैं पूरा शॉर्ट पुट देखूं. स्प्रिंटर चाहता है कि मैं उसकी स्टार्टिंग से फिनिश तक देखूं. तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत हो जाती है. So the 200 meters for women, the heptathlon actually, that was the first of them. The heptathlon where unlike the decathlon, back to the short put, नरेश एंटिल, सीमा एंटिल की बात करेंगे जब वो थ्रो कर रहा है. 4 एशियन गेम्स, 29 साल. अगर इफ आई गॉट हर एज राइट, मुझे एज बढ़ाना नहीं उसकी क्योंकि मैं नहीं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग इंडिया की एथलीट रही है और है भी अभी. क्योंकि देखो, इतने लंबे टाइम तक स्पोर्ट्स करना बहुत मुश्किल है. मेरी समझ में तो मुझे लगता है कि लेडीज के अंदर या जेंट्स के अंदर भी इतना लंबा स्पोर्ट्स शायद किसी ने किया हो. सीमा अंटिल को सलूट है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग एथलीट है. बहुत कम बात करती है. हाँ, बिल्कुल. नाउ वॉचिंग ये परमजीत जो एथलीट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा. ये बाबा बलविंदर सिंह, हमारे जो एशिया के चैंपियन रहे, उनका बेटा है. शायद बाबा बलविंदर जी भी यहाँ आए हुए होंगे. आप अगर शॉर्टपट में देखेंगे तो अलग अलग ड्रेस का आज ज़माना आ गया है. जी जी. तो जैसे इन्होंने आज फुल ट्रैक पैंट पहनी हुई है, बहुत से शॉर्ट्स पहनते हैं. कोई आइडियल ड्रेस कंडीशंस होती है जो आपके परफॉर्मेंस को. विल नाउ गेट बैक टू दी 200 meters for the heptathlon. This of course is the second of the heats with Jyoti 1738 points, Sonu Kumari 1602 points. But इसमें दर्शकों के लिए ये बताना चाहूँगा कि 1 या 2 का महत्व ये रखता है कि गोल्ड नहीं है, लेकिन हेप्टाथलन में जैसे डिकैथलन है तो पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं जितने आपके टाइमिंग अच्छी हो. पॉइंट सिस्टम है ना, जिसमें रनिंग में जितना जिसका टाइम बेस्ट होगा उसके उतने ही पॉइंट्स ज्यादा होंगे. सिमिलरली इन द थ्रोज, इन द जंप, इन द हेप्टाथलन एंड द डिकैथलन, ज्योति 25.81 वो इस इवेंट में आगे चल चुकी है. हरियाणा की 1738 पॉइंट्स. ये हम जब वो ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, कोई ऐसे परफेक्ट ड्रेस है जिससे परफॉर्मेंस की सुधारना होती है, अच्छी परफॉर्मेंस आती है? ये तो एथलीट के ऊपर होता है. कई जो है फुल ट्रैक सूट पहन के करते हैं, जैसे मान लो लोअर पोर्शन पूरा पहनते हैं. कई जो है वो टाइट्स पहन के करते हैं. ये तो एथलीट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कंफर्टेबल किस में है. 996 नवीन ऑफ द एसएससीबी. अगर आप उसके राइट घुटने को देखो तो उसने वो नी बैंड पहना हुआ है. नी कैप है, शायद उसमें कहीं उसको कोई पेन फील हो रहा है, इसलिए उसने, क्योंकि ये रोटेशन जो फेंकते हैं रोटेशन से, इसके अंदर
ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि दोनों घुटने रोटेट होते हैं इसके अंदर, तो ये नी की प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस होते हैं अगर आप उसकी जॉइंट्स की ट्रेनिंग पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आजकल जो फिजियो हैं और जो मश्योर हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं, खासतौर पर नेशनल कैंप के अंदर या हमारे एनसीओई के अंदर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो कि बच्चे का जो रोटेटरी सिस्टम में जो जैसे जो डिस्को से फेंकता है या डिस्कस फेंकता है, तो उसका मतलब जो है ना उसको पहले अवेयर करते हैं कि आप मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो उसको बनाए रखिए। आज मैं सवेरे डॉक्टर से बात कर रहा था। वी वर नाउ वाचिंग 902 which is आशीष बलोटिया ऑफ द रेलवेज। तो मैं ये पूछना चाहता था, मैं ड्रेस के ऊपर वापस आऊँगा, लेकिन जब ये लिस्ट मैं देख रहा हूँ 12 की, तो सारे नॉर्थ इंडिया के एथलीट्स हैं। तो ये दर्शाता है कि जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सर्विसेज के भी एथलीट्स हैं, शायद पंजाब हरियाणा के वहीं से रेलवेज के भी वहीं से हो। जी जी जी। तो ये पक्का है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो शॉर्टपुट में आ सकते हैं, आप कहते नहीं ऐसे कोई बात नहीं है? नहीं, स्ट्रांग तो होना जरूरी है। अब जैसे मान लो पहले ऐसा नहीं था हमारे टाइम में। आपको अगर याद है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, एसडीसन बिल्कुल, और एक लेडीज में भी थी जो बक्टा और खंबाटा जो बम्बई की थी, और एक हैदराबाद से भी लड़की हुआ करती थी। हाँ। तो वो शायद एक्सेप्शंस हो गए। नहीं, वो जैसे इसमें जैसे एसडीसन की उसकी हाइट अच्छी थी और उसमें मतलब वो कर सकते हैं बच्चे, लेकिन आजकल तो इतना नहीं है क्योंकि हर जगह से ही हमारे टैलेंटेड अच्छे बच्चे आते हैं। अब आप जूनियर्स लेवल में देखेंगे तो इसमें जैसे डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, और शॉर्टपुट के अंदर भी, वुमेन के अंदर भी काफ़ी लड़कियां जो है पूरी जगह हर देश के हर हिस्से से आ रहे हैं अभी। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये जो थ्रोज के इवेंट्स थे इनके कोचेज की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आजकल जो है हमारे पूरे देश के अंदर हर जगह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है वो एनसीओई खोल रखे हैं, एसटीसी खोल रखे हैं। तो जो देश के अच्छे कोच हैं वो उनको डेप्यूट करते हैं कि जैसे अभी कोई त्रिवेंद्र में भी है, कोई गुवाहाटी में भी है, तो नॉर्थ के कोच जो थ्रोज के कोच हैं वो वहाँ जाके उन पर काम करते हैं। तो ये सब जगह से ही बच्चे आ रहे हैं अभी। साहेब सिंह ओएनजीसी, ये साहब सिंह अभी एशियन गेम्स में गए थे, इनके घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम उस टाइम थी, अभी भी शायद हो सकती है, क्योंकि ओएनजीसी में ये है कि खेलना जरूरी होता है, इसलिए ये शायद पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। Oh, wonderful. Someone who has taken part in the Asian Games to come here and take part is creditable. Yes. क्योंकि क्या हुआ, दो हफ्ते हुए, अभी 2 हफ्ते हुए हैं, और पीछे पीएम साहब की तरफ से भी वो जो है उनका वेलकम था, और उसके बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी किया, तो टाइम में बिल्कुल कम था, और फिर भी जो एथलीट यहाँ आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जसपाल पंजाब, मैं सवेरे डॉक्टर से बात कर रहा था, यहाँ के जो डॉक्टर है भरत, तो वो वही कह रहे थे कि अगर इंजरी हो तो बहुत से एथलीट्स उसको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको डर लगता है कि मैं सिलेक्ट ना हूँ। 17.06 फॉर जसपाल ऑफ पंजाब। फर्स्ट थ्रो था, सेकंड थ्रो 17.36 17.36 फॉर सेकंड, सो ही इज इम्प्रूविंग। यस सर। तो वो कह रहे थे इंजरी जितनी जल्दी आप डॉक्टर को बताओ और ट्रीटमेंट ले लो, नहीं तो वो एग्रीवेट हो जाती है। यस, आजकल तो ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको कोई इंजरी है तो उसकी क्योर जो है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर फिजियो हैं वो एक्सपर्ट हैं, तो उनको बताना चाहिए। लेकिन बहुत कम ऐसे एथलीट होते हैं जो इस चीज़ को छुपाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कोच को पता लग जाता है। जब आप फील्ड के अंदर उससे वर्कआउट कराएंगे तो कोच को पता लग जाता है, तो कोच और एथलीट मिलकर डॉक्टर के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आजकल हमारे पास में बहुत अच्छे डॉक्टर और फिजियो हैं। वागले साहब, मैं आपको एक छोटा सा चर्चा करता हूं कि हमारे पास एक अभी एनसीओई के अंदर 1738 शिवम चौधरी 17.38, फर्स्ट वाज अ फाउल। हाँ, फाउल करने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरी थ्रो कंट्रोल से करना होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक जैसे फिजियो है, तो रौनक करके एक फिजियो है, वो बहुत अच्छे फिजियो हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 96 अटलांटा ओलंपिक के टाइम मेरी काफ के अंदर एक इंजरी थी, और मैंने उसको दिखाया तो मेरे को उसके अंदर थोड़ा सा पेन फील होता था, लेकिन 3 सीटिंग के अंदर, कितनी पुरानी वो मतलब इंजरी थी, 3 सीटिंग के अंदर ही मुझे उसमें काफ़ी रिलीफ हुआ। फिर मैंने सोचा कि देखो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है, कि कितनी पुरानी इंजरी को इसने उसी
3 सीटिंग में ठीक कर दिया। अगर ये उस टाइम पर भी होता तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन अब इंप्रूवमेंट हो रहा है वैसे। Looking at Parveen Daya, 17.24 in his first, now attempting the second. वो कहते हैं ना शक्ति कि आपका आज दिन खराब है ऑफिस में, हाँ। बैड डे एट ऑफिस, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल होता है। तो इससे आप कैसे बाहर निकलते हैं? देखो उसमें कई कारण हो जाते हैं अगले साहब। यो गुड थ्रो 17.82, वेरी गुड। इसमें क्या हो जाता है कि कई बार अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है एथलीट की, तो वो क्या होता है कि उसको मतलब रात को अगर मान लो नींद पूरी नहीं हुई आपकी, या फिर आपने खाने में कहीं कोई गलती कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ध्यान रखना पड़ता है लास्ट के 15 डेज एक एथलीट को, उसमें बहुत अप डाउन हो जाता है। और मैंने बहुत से ऐसे एथलीट देखे हैं कि बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, लेकिन उसमें अगर उसको नींद नहीं आई, और नींद नहीं आने का कारण भी यही होता है कि मैं कल अच्छा करूँगा, लेकिन वो बच्चा अच्छा नहीं कर पाता। तो कोच ही उसमें क्या करता है कि किसी एथलीट की जैसे मान लो परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका हम वीकली ट्रायल लेते हैं। और वीकली ट्रायल लेके जैसे हमने उसको सैटरडे को बता दिया कि मंडे को आपका ट्रायल है और आप तो नेशनल रिकॉर्ड करेंगे, तो वो एथलीट अगर मान लो मंडे को अच्छी परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर हम उसको समझाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है अपने परफॉर्मेंस को लेके वरीड थे, इसलिए आपकी थ्रो अच्छी नहीं लग पाई। तो मेन कंपटीशन के अंदर भी आपने जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब एशियन गेम्स में जाएं या ओलंपिक्स में जाएं, तो इस चीज़ को पूरा नॉर्मल तरीके से लें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एथलीट हूं, और मैं अगर आपसे पूछूं, वी स्टिल लुकिंग एट आशीष कुमार 16.76, 16.61, not good enough, but when you look at 17.35, should be amongst the top bracket. Top 8, yes. But remember, 21.77 is the national record. It's a good, big throw. असल में थ्रोज के अंदर कम से कम 10 साल का एक पीरियड लगता है वागले साहब आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर आने के लिए। तो इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मोस्टली जूनियर्स बच्चे हैं, तो अभी ये 22, 23, 24 साल के आसपास के हैं। तो मतलब ये बोलते हैं कि मोस्टली थ्रोवर रीच देयर प्राइम राउंड आफ्टर 30। तो थ्रोज के अंदर आप देख ले, पुराने खिलाड़ी भी थे, मैं भी था, तो मैंने तो 43 तक किया। तो 43 तक अगर आप किसी को बताएं कि आप 43 साल की उम्र में आप एशियन चैंपियनशिप खेल रहे हैं। एक किस्सा मैं बताऊं एशियन गेम्स का, एक चाइनीज अटलांटा ओलंपिक नहीं, ये सिडनी ओलंपिक की बात है। तो एक चाइनीज एक इंटरव्यू लेने के लिए आ गया, वो बिल्कुल इंडियन लगे और हिंदी में बात करे। तो हमारे एक वो हिंदी के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कह सकते इसको कुछ बताना, ये चाइनीज है। वो ये तो हिंदी बोल रहा है, बोला नहीं ये चाइनीज है। अच्छा, उसने मेरे से पहला क्वेश्चन ये किया कि इस एज में आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बोला इसको कुछ नहीं बताना, ये चाइनीज है। वो कुछ नहीं फर्क पड़ता आजकल, तो जो है ना ये चलता है ऐसे। तो एज का जो है इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जितना आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, तो उसमें टाइम लगता है। और मैं तो एथलीटों को यही कहूँगा कि जो जूनियर एथलीट हैं वो जल्दी ना करें। जब हम इनको देख रहे हैं, और 2000 में आप सिडनी में थे। जी जी। मेरे सामने हैं आरसी हरजू फिनलैंड के, यस यस यस, एडम नेल्सन यूनाइटेड स्टेट्स के। विल टॉक अबाउट दैट एट द फिनिश ऑफ दिस। इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 16.87 to 17.08, but not good enough to be amongst the podium. Yes, yes. I'm sure he needs a bit more. Is this a better one? नवीन 16.26, और जो मुझे भी याद है, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता था, जॉन गुडीना यूनाइटेड स्टेट्स के। yes, yes. तो इनको देख के आपको यानी क्या आप उनसे सीखे, या उनसे क्या आपको एक्सपीरियंस आया? देखो एक्सपीरियंस तो बहुत आया, और कई चीज़ें ऐसे हैं वागले साहब जो अब हम इसमें यूट्यूब पर देख लेते हैं। तो मेरा तो इंटरेस्ट ये रहता था, जैसे जॉन से मेरी बड़ी अच्छी बात बनती थी, इंडिया में भी वो आए थे एक बार, तो मैं उससे टिप्स पूछता था कि आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या डाइट लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें आजकल आम हो गई हैं, हमारे एथलीट को भी पता लग जाता है कि हम किस चीज़ की कैसी ट्रेनिंग करें। हमारे कोच भी उस चीज़ को अब समझते हैं। उस टाइम पर ये चीज़ें इतना वो नहीं था कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑफ सीजन में कैसे होगी, स्पीड वर्क में कैसे होगी, डाइट आप कैसे लेंगे।
लेकिन आजकल तो पूरे का पूरा सिस्टम ये है कि आपका जो फैट का लेवल है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है, अब पावर की बजाय स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, स्पीड जिसके अंदर ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब पहले ज़्यादा मेरे टाइम में तो ऐसा लगता था कि जो स्ट्रेंथ के ऊपर हम ज़्यादा वर्कआउट करते थे, लेकिन अब स्ट्रेंथ की बजाय आप स्पीड के ऊपर और टेक्निक के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो फोकस अभी हमारे एथलीट देते हैं, और उसका नतीजा भी ये है कि हम अच्छी जो है परफॉर्मेंस अब दे रहे हैं। रैंडी बार्न्स और उल्फ Yes. टिमरमैन, यस, रैंडी बार्न्स टिमरमैन के साथ हमने कंपटीशन किया, जर्मनी में भी किया हमने 88 के अंदर। तो वो जो एथलीट थे वो एडवांस थे, वो हमारे वो यहाँ इतना टेक्नोलॉजी और न तो डाइट का इतना वो आइडिया था और न ही ट्रेनिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, लेकिन अब तो बहुत चेंज है, अब बहुत चेंज है। 17.95 for Abhilash Saxena. He is representing Abhilash is representing the railways. Two railway boys, two fouls there, so 17.95 it's a good throw, first throw. 18.55. The beauty is, और मैं इसके बारे में और एक बात पूछने वाला था कि जब आपने बात की कि तो फर्ज करो नीरज चोपड़ा है, we'll talk about that at the end of this throw from Abhilash Saxena, 17.95. तो जैसे नीरज चोपड़ा है तो उसको अपने कोच इवेंट के 6 दिन पहले और 24 घंटे पहले यस 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 क्या बताते होंगे? पांच चीजें, बहुत कुछ चीजें कि आपको मेंटली रिलैक्स कैसे रहना है, मेन चीज तो ये है, और फिर उस दौर में आपने स्लीप कैसे लेनी है, और उसमें आपकी बॉडी को शक्ति, मुझे तो ये पता है कि आपको मेंटली रिलैक्स करना है, हाँ, लेकिन मेंटली रिलैक्स करना है क्या करना है? नहीं, उसके लिए मतलब जो है ना आजकल तो एक्सरसाइज है, आजकल एक्सरसाइज है, मेंटली रिलैक्स रहने के लिए एक्सरसाइज है। फिर ये जैसे आप जो खाना है वो कैसे खाएंगे, आपकी डाइट प्लान क्या होगी, आपकी डाइट प्लान क्या होगी, एक वीक के अंदर जो लास्ट का एक वीक है, लास्ट के 24 आवर्स हैं, उसके अंदर आपका जो ट्रेनिंग है उसमें रिकवरी कितनी होगी, मेंटल रिकवरी कितनी होगी, फिजिकल रिकवरी कितनी होगी, मसाज आप कैसे लेंगे, और अगर आपके बॉडी में कहीं पेन है तो फिजियो उसको किस लेवल तक रिलैक्स करेगा। अगर हम ज़्यादा रिलैक्स कर देंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, अगर हम उसको कम रिलैक्स करेंगे तो आपके अंदर वो इंजरी फील रहेगी। लेकिन नीरज जो है वो तो नीरज है, वो तो मतलब हमारे देश को एक गॉड गिफ्ट है, और वो इतना अच्छा लड़का है कि मैं तो ये बोलता हूँ कि वो अभी बहुत अच्छी आगे परफॉर्मेंस देगा और ओलंपिक्स के अंदर वो बहुत अच्छा करेगा। मुझे पता नहीं कि कितने लोग जानते हैं 17.06 improving to 17.36, so that's his best, slipping to 15.37, and now on to the fourth for Parth Lakra. He's got 2 fouls there. मुझे पता नहीं कि कितने लोग शायद अपने दिमाग में डाल चुके हैं कि नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन, यस, ओलंपिक चैंपियन, यस, एशियन चैंपियन, यस, टू टाइम्स कॉमनवेल्थ चैंपियन। यस सर। तो हम कहते हैं ना मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है, हाँ, लेकिन वो तो एक मैं ये शब्द प्यार से यूज करूंगा कि वो एक ग्रीडी है, यानी वो कहता है मुझे और हासिल करना है, मुझे और हासिल करना है, और मुझे और हासिल किसके लिए करना है? देखो, देश के लिए, देश के लिए करना है, और उसके अंदर आप ग्रीड वाला ना कहें, अब उसका टारगेट है कि मेरा जो डिस्टेंस है, नहीं उसके लिए मैंने कहा ग्रीडी जो शब्द है वो प्यार से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहा हूं। यस सर, लेकिन अब उसका जो टारगेट है वो डिस्टेंस के ऊपर है। अब जैसे मान लो उसका जो एक कोच रहा है जोहन, उसने जो खुद 100 मीटर से ऊपर लगाया, जो खुद वर्ल्ड चैंपियन है, खुद वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन। तो नीरज का भी मेरे को लगता है कि ऐसे सोचता होगा कि मैं इसको 100 मीटर मार सकता हूं, और वो मार भी सकता है, और आगे आने वाले टाइम में आप देखना कि उसकी जो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका नेक्स्ट कंपटीशन जो होगा वो 90 प्लस होगा। और मैं तो ये सोच रहा था कि अभी इस एशियन गेम्स में भी उसको, मैं अभी मिला था, पीछे घर पर गया था उनके, तो उसको जो है ये ग्रोइन इंजरी थी, और उसमें अगर वो फिट रहता तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी, एशियन गेम्स के अंदर भी वो 93 के आसपास हम सोच रहे थे कि वो इतनी थ्रो लगाएगा, और वो लगा भी देता। मुझे जब उसने शुरुआत की थी, जी सर, वो जब कंपटीशन शुरू हुई थी, मैं टीवी पे थोड़ा सा डर के नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे तो जेना ने उसको एक थोड़ी पुश की ना। यस, देखो वो जो एशियन गेम्स में जो थ्रो नीरज भाई ने लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ जेना की वजह से लगी है, क्योंकि जेना ने उसको पुश किया,
और जैना ने जो थ्रो लगाई है वो नीरज का जो उसके साथ हौसला अफजाई जो होता है ना एक सीनियर एथलीट का, उससे उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे देश के अंदर जेवलिन के मैं तो ये मानता हूँ जैना तो है, नीरज भी है, 5-6 एथलीट हमारे दीपी मन्नू है, दीपी मन्नू है, हमारे यहाँ 5-6 ऐसे एथलीट हैं जो अभी 85 के ब्रैकेट में। बिल्कुल। लेफ्ट हैंडर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन। कितना फर्क पड़ता है शॉर्टपट में, आप साउथ पॉ जो हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड हो वहां पर। नहीं, लेफ्ट और राइट का तो इसमें इतना ज़्यादा मैं तो नहीं मानता कि कोई मतलब इफेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि मैं तो राइट हैंडेड थ्रोवर था। तो ये तो टेक्निक का तो बॉडी का तो पोस्चर वही जाता है, पावर पोजीशन वही होती है, आपकी रोटेटरी फोर्स वही होती है, तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गेम्स के अंदर मैं सोचता हूँ जैसे वॉलीबॉल है उसमें फर्क पड़ जाता है आगे वाले खिलाड़ियों को कोई आइडिया नहीं आता कि ये क्या करेगा। अब जैसे बास्केटबॉल है, अब जैसे हॉकी भी है, अगर लेफ्टी है तो वो मतलब राइटी को समझ में नहीं आएगा कि वो बंदा कहाँ से क्लिक कर जाएगा। लेकिन शॉर्टपुट के अंदर तो ये इंडिविजुअल इवेंट्स है, इसके अंदर आप अपना एफर्ट्स दिखाना है और टेक्निक वही है, पावर पोजीशन वही होती है, सिर्फ उसका फेस चेंज हो जाता है। आशीष कुमार इम्प्रूविंग इट द सेकेंड आउटिंग 17.42। और अगर जैवलिन में ये पॉसिबल है, जैसे आपने कहा कि नीरज चोपड़ा, जैना, डीपी मन्नू और भी है 4-5, तो बाकी के में भी अविनाश साबले जैसे स्टीपल चेस बहुत कम बात कर रहे हैं उसके बारे में। नहीं, साबले उसके बारे में बात क्या करें, उसके बारे में तो जितना करें उतना कम। वो तो इतना आउटस्टैंडिंग हमारा मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस का स्टीपल चेस का एथलीट है। आप ये देखें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसकी पूरी रेस देखी, अगर वो ब्लॉक के अंदर नहीं आता, आपने भी देखा होगा, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। और उसका गुस्सा था उसको। एशियन गेम्स में अब अगले साल आपने देखा होगा कि उसने तकरीबन रेस जो है लीड करके लगाई है, और वो बहुत अच्छा एथलीट है। और आगे आने वाले टाइम में हमारे बहुत से एथलीट ऐसे हैं जो वर्ल्ड को चौंका देंगे ओलंपिक्स के अंदर। शक्ति देखो, 28 साल कॉमनवेल्थ गेम्स में कीनिया का जो वर्चस्व था स्टीपल चेस में, और ये नहीं कि गोल्ड 1 2 3 yes, और वो मोनोपोली उसने जो बर्मिंघम में तोड़ी, बहुत आउटस्टैंडिंग। ये मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल एग्जाम्पल है सर। इसमें ये लगता है कि हमारे देश की जो स्पोर्ट्स की इंप्रूवमेंट है, हमारे देश के अंदर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है वो बढ़ के आ रही है। इसमें तो एशियन गेम्स में हमने बता दिया ना। I love the word which you use, sports industry. Yes. Because it is now become an industry. Yes. And हालांकि आप सब लोग प्राइड, नेशन की प्राइड, अपनी एम्प्लॉयज़ की प्राइड, रेलवे सर्विसेज, ONGC, लेकिन ज़्यादातर नेशन की प्राइड जब आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। जी। लेकिन आज के दिन में पैसा भी है स्पोर्ट्स में। पैसा सर, पैसा है। देखो, पैसे वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं ना। अब हमारे एथलीट के पास में जो उसका ट्रैक सूट है, उसका शूज है, उसकी डाइट है, उसकी जो मेंटली फ्री रहता है, पेरेंट्स जो है वो मतलब सेटिस्फाइड है। पहले तो पेरेंट्स जो है ना स्पोर्ट्स के लिए तो अलाउ करते नहीं थे बच्चे को, कि क्या करेगा स्पोर्ट्स करके, आप जॉब करेंगे। अगर एक कोई बाबू लग जाता है रिटायरमेंट के टाइम तक, वो वहीं जाता था जहाँ एक स्पोर्ट्समैन इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ पहुँचता है। लेकिन आजकल तो स्पोर्ट्स के अंदर जो है पैसा आया है, तो ये तो बहुत अच्छा साइन है। और पैसा आने से अब देखो कितना इम्प्रूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कि ये पारुल चौधरी, एक लड़की का इंटरव्यू था अभी पीछे, हमारी जो इसमें एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल लिया है, वो बोलती है कि लास्ट के 10 मीटर के अंदर मुझे ये लगा कि मैं यूपी पुलिस में DSP लग जाऊंगी और मैंने जोर लगा दिया। तो सर देखो कितना हौसला होता है। अब एक इंसेंटिव से बच्चा दौड़ते टाइम उसके दिमाग में ये बात आया कि लास्ट के 10 मीटर्स के अंदर मैं इसको 4-5 सेकंड के अंदर अगर मैं इसे सिल्वर ब्रॉन्ज को गोल्ड में कन्वर्ट करूंगी तो मैं वहां जाते DSP लगूंगी। तो देखो कितना बड़ा इंसेंटिव है। और पैसा तो सर, ये पैसा तो है ही है। बंदे की जो बच्चे की लाइफ है, पेरेंट्स की लाइफ है, सोसाइटी के अंदर उसका एक रुतबा बढ़ता है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और शायद वही उसका ही एक स्टेटमेंट था, वो कह रही थी कि मैं मेरठ से आती हूँ। उसकी जो थी कि मुझे लोग हंस रहे थे कि मैं शॉर्ट्स पहन के दौड़ती हूँ। बेटे, शॉर्ट्स पहन के दौड़ा नहीं करते, आप कपड़े पहना करो। और उसने कहा मुझे सबको रॉन्ग प्रूव करना था। yes. और आज के दिन में पुरुष और लेडीज में कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब पहले कुछ होता था, लेकिन आजकल तो मतलब जो है दुनिया बहुत छोटी हो गई है सर। अब देख लो आप, अब हम जो है ये जो इसमें अब आपको ये डायरेक्ट रिले करते हैं,
तो ये इंडिया के हर घर में जहां स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है वो सभी बच्चे डायरेक्ट देखते हैं, कितना छोटा होगा। बिल्कुल। और पहले पता ही नहीं होता था कि नेशनल मीट हो रही है। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको न्यूज़पेपर से पता लगता था दूसरे दिन की कल का रिजल्ट क्या है। आप तो लाइव देख रहे हैं। आप ऐसे ही वर्ल्ड की मीट में कहीं पर भी जाएं तो ये दुनिया छोटी हो गई है। और ड्रेस की बात जो है ये तो बहुत मतलब है, कुछ एरिया के अंदर, गाँव के अंदर मतलब ऐसा फील करते हैं कि भी लड़की को जो है ऐसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। Ladies or girls in all walks of life, they fly the Jaguar now, they fly the Rafale aircraft. एक ज़माना था कि उनको हेलीकॉप्टर के बियॉन्ड या ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के बियॉन्ड अलाउ नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज फाइटर पायलट्स बन गए हैं, फाइटर पायलट्स बन गए हैं, आर्मी के अंदर ऑफिसर हैं, पुलिस के अंदर कमांडिंग ऑफिसर ऑफिसर बन गए भी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फेंट्री में या Infantry, yes. आर्टिलरी में। हम्म। We'll look at the 4x400 meters relay. 1, 2, 3, 1 and 2 are vacant. Haryana is in 3, Railways in 4, ONGC in 5, Punjab in 6, Tamil Nadu in 7, and the police in 8. This is the 4x400. Remember, this is not the 4x100. 4x400 meters, and this is very different from the men. The 4x400 meters, only the first lap and the bend of the second lap are run in lanes. And that's why I'm repeating, only the first lap and the bend of the second lap are run in lanes. There are no changeover zones as in the 4 into 100. और हम उसी बात कर रहे थे कि 4x100 में चेंज ओवर जोन होता है। यहाँ पर चेंज ओवर जोन नहीं है। जी जी जी। Visual exchange is used rather than a blind pass due to the fatigue and slower speed of the incoming runner. Watch the outgoing runner turn to face the incoming runner and take the baton out of the incoming runner's hand rather than being given the baton. Relays, of course, involve large number of athletes. वागले साहब, अब आप देखेंगे कि जैसे रिले का इवेंट जब शुरू होता है तो सारे के सारे जो एथलीट और कोचेज हैं उनकी नज़र हो जाती है कि रिले की टीम में इतना इंटरेस्ट पड़ता है। इसका कारण एक ये भी है कि इसमें पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं टीम चैंपियनशिप के लिए। Excellent point. That's a very good point that you made, Shakti. As they will now set off on the first leg, 1600 meters is what they need to cover, the four of them. We discussed before, today we've now even come to the mixed relay. Yes, mixed relay. Yes, and that has perhaps raised the, as I can see, everyone here in the stands are watching this event. Yes, sir. And the 4x100, the Jamaicans, the Americans, the Australians, the Indians 4x100, I remember आपके टाइम में शायद या थोड़े पहले पीटी उषा, हाँ नहीं, वो हमारे टाइम में तो थे सारे। वंदना शानबाग, वंदना राव, यस यस। 4x100 में अश्विनी नचप्पा, यस। शाइनी इब्राहिम हुआ करती थी। शाइनी इब्राहिम 4x4 और 100 भी शायद कभी लगाया होगा उन्होंने, क्योंकि वो स्प्रिंट्स इवेंट्स में ही आ जाता है। ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग जबरदस्त एथलीट थे। इट्स सैड एज यू राइटली सेड, टेलीविजन कवरेज ज़्यादा नहीं था उस ज़माने में। बिल्कुल नहीं था सर। और टुडे आज तो हम AFI का जो चैनल है वो तो अंडर 23 कवर करता है। निर्जम आपको याद है कवर किया था पटना के अंदर, चारों दिन। बिल्कुल। तो सवेरे से 6:30 बजे से शाम 7 बज जाते। वो तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन। अच्छा, ये कंपटीशन देश को जो टैलेंट जो मिलेगा वो वहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट आपको मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्ट कंपटीशन वहाँ पर टीमें आती हैं और जो कोच होते हैं और जो एथलीट होते हैं उनको डायरेक्ट मौका मिल जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट की टीम से जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो वहाँ 6-7 हज़ार बच्चे इकट्ठे हो गए। सो दैट्स द लाइन अप देयर। हरियाणा, Railways, ONGC, Punjab, Tamil Nadu, and the police. The police would obviously involve the CISF, the CRPF, the BSF. Yes, state police also. The state police as well. That's a big number. Very big number, sir. Very big number. The ITBP. Yes, ITBP also. वागले साहब, मैं ITBP में भी जॉब किया। Oh, wonderful. ITBP, हरियाणा पुलिस, CISF, Haryana Sports Department, Railways. Now I am in SAI. Wonderful, wonderful. And contributing to the society, to the youth,
and the nation. यस सर. Give it back to the nation or give it back to society. कहाँ लेके जाना है? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, सोसाइटी को देना बहुत जरूरी है. अगर हम सोसाइटी को नहीं देंगे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ चला जाएगा. तो मैं तो आपके चैनल से सभी हमारे जो सीनियर एथलीट हैं, पुराने जो एथलीट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां भी हैं, जहां भी आप अपने रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, तो आप ग्राउंड में जाएं और बच्चों को, अगर आपकी जो प्रेजेंस है उसी से बहुत फायदा हो जाएगा. मैं तो कह रहा हूं कि 10 या 100 में से इवन एक भी अगर आगे आ जाए तो जी, यू जी. डन योर जॉब. अब ये देख लो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है. भिवानी के अंदर हमारे जितने भी पुराने एथलीट हैं जो भिवानी शहर में रहते हैं, वो मोस्टली सुबह एथलीट से पहले ग्राउंड में आते हैं. और उनको बच्चे जो छोटे जो जूनियर बच्चे हैं हर डिसिप्लिन के, चाहे उसमें बॉक्सिंग के हों, एथलेटिक्स के हों, कबड्डी के हों, वॉलीबॉल के हों, तो उनका ये होता है कि वो जूनियर बच्चे मोटिवेट होते हैं कि देखो ये सीनियर एथलीट हमारा पुराना एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ का है, ओलंपिक्स मेडलिस्ट है, ये जब इतना जल्दी आते हैं तो हम भी जल्दी आए. तो वो एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर. Well, since he mentioned about the past athletes, I will get him here about the Cuban 110 meters hurdler who's here in the stadium. I'll talk about him later. But I think we are not ready because the shot put is on at the far side. And there's a possibility that the putt might get into the way of the 400 meters, the 4x400. नहीं, वो साइड माल नहीं है सर उसमें, क्योंकि डिस्को पुट से फेंकते हैं वो, मतलब जो है ना उसके लेफ्ट साइड में जा सकता है. राइट में चांसेस कम है. So we are clear now. Yes. Nevertheless, the relays, of course, involve a large number of athletes, as we all know. It's important always that the changeover zones are well controlled by the officials. और जब हम बात करते हैं इवन 4x400 में बेटन एक्सचेंज जो है, अगर आपने घाई में, व्हाट्स दैट, they've gone, one of them, maybe some foul start is there. well, I'm a little surprised. रिले के अंदर चांस कम होता है सर. बिल्कुल. मैं अब टाइम है थोड़ा सा, तो अगर आपको याद होगा ओलंपिक गेम्स में क्यूबा का आर्नियर गार्सिया जो 110 मीटर्स हर्डलिंग चैंपियन, गोल्ड मेडल विनर था ओलंपिक गेम्स में, वो आज गए 3 दिन से यहाँ पर है. और उन्होंने ओलंपिक गेम्स में जो 4 लोगों को हराया था वो 3 अमेरिका के थे. हाँ. बड़े नाम थे, टेरेंस ट्रेमल, माइक क्रियर और और इंग्लैंड के कॉलिन जैक्सन बहुत आउटस्टैंडिंग स्प्रिंटर. तो इनको हरा के इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता था, वो आज यहाँ पर है. तो इनसे बात करके मेरे हिसाब से बच्चों को बहुत हर्डलर्स को फायदा लेना चाहिए, और हमारे जो जूनियर्स बच्चे हैं वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं इसके अंदर. The triple jump being introduced. There is some problem out there. I don't know whether it's the gun which is an issue, but the introduction to the triple jumpers, the triple jump, there are 14 of them. Shakti, Mayuka Johnny, yes. कोबे में 14.11 2011 में. तो आज 13 साल हो गए जो नेशनल रिकॉर्ड अब भी है. मयूका जॉनी ऑल्सो होल्ड्स द मीट रिकॉर्ड ऑफ 13.78. मेरे ख्याल से मैं अंजू को हमेशा पूछता हूँ, बॉबी जॉर्ज, कि एक बहुत कठिन डिसीजन था कि वो ओरिजिनली ट्रिपल जंपर थी, तो ट्रिपल जंप से लॉन्ग जंप शिफ्ट करना. असल में वो दोनों इवेंट ही करती थी, लेकिन मैंने जो है वो ट्रिपल जंप था. तो वो शिफ्ट करना लॉन्ग जंप के लिए, अब अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या वो अगर लॉन्ग ट्रिपल जंप में कंटिन्यू करती तो और अच्छा उसको और देश के लिए परफॉर्मेंस आता. नहीं, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते सर, लेकिन मतलब जंप्स के अंदर अगर आप ट्रिपल जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो वो इसमें चेंज करना भी मतलब ज़्यादा इतना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि जो बेनिफिट होता है ट्रिपल जंप का, क्योंकि ट्रिपल जंप के अंदर भी आपने जो है 3 बार सिंगल लेग के ऊपर आपने जंप्स करना है, और जब आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आप एक टेक ऑफ के ऊपर लैंड करते हैं.
तो अगर आप एक टेक ऑफ पर लैंड करते हैं तो वो मोटिवेशनल अंदर से भी एथलीट ऐसे हो जाता है कि मैं 3 बार जंप लूंगा, उससे अच्छा मैं एक जंप करूं, और उसके बाद फिर जो है बाद में कुछ अच्छा जंप निकल जाता है। जैसे मान लो मैं मेरा केस बताऊं आपको, जैसे मैं डिस्कस थ्रो से शॉर्ट पुट में आया, तो शॉर्ट पुट में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने का कारण ये था कि मैं रोटेटरी फोर्स दोनों में यूज होती है, डिस्कस में और शॉर्ट पुट के अंदर। तो मोस्टली जैसे 100 मीटर का एथलीट है वो 200 मीटर करता है, या 200 मीटर का 100 कर लेता है, तो ये एक थोड़ा सा सिमिलर इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे 800-1500 मीटर का भी हो जाता है, 5000-10,000 का भी हो जाता है। So the stage is then set finally for the 4x400 long weight. ये रुकना एथलीट्स के ऊपर कभी कभी साइकोलॉजिकल एक प्रेशर डाल देता है। वो थोड़ा सा अपने आप को कूल फील कर लेता है, एक तो पूरे जोश के साथ आता है, अगर उसी में स्टार्ट हो जाए, या फिर उसमें जैसे अपना ये देखो अब 100 मीटर हर्डल से एशियन गेम्स के अंदर जो था, एक फाउल स्टार्ट के बाद में वो बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग वापस आया, नहीं तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। So the women are now on their mission. They are into the back straight, 400 meters. The first lap will be run in the respective lanes, and then they will, of course, in the second lap, the bend of the second lap will be run in the outside. So I'm repeating that in the 4x400 meters, unlike the 4x100, only the first lap and the bend of the second lap are run in the lanes. In the outside, the police looked strong to start off with, but next to Tamil Nadu, the 4x400, the first of the baton exchanges, sizable lead. आपको चारों जो एथलीट है शक्ति, हालांकि तमिलनाडु को अच्छी लीड मिली है यहाँ पर, वो लीड अब कम की गई है, और मेरे ख्याल से वो जो तमिलनाडु की लीड थी वो चली गई है। It looks as if ONGC or Punjab, one of the two teams, that they now come the inside after the bend on the second lap. काफी अच्छी लीड है वैसे अगर आप देखें फर्स्ट की। It is still Tamil Nadu. It's a lap that's 400 and now coming to the final 100 for the second athlete. Will she be able to hold on? Will she be able to continue to give that lead to the number 3 correction, waiting to take the baton? और उसके लिए शक्ति मैं वही कह रहा था कि लोगों को लगता है कि 4x100 में जो बेटन जोन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4x400 में भी अगर आपसे कई गलती से स्वेटी पाम है, पसीने से भरे हुए है, और आपके वो स्लिप अगर हो गई, या अगर आपने बेटन देने में कुछ संकोच किया, तो 4x400 में इतना ही कठिन, वैसे ही कठिन है, बहुत मुश्किल, क्योंकि लास्ट के अंदर तो हर एथलीट बिल्कुल थक जाता है। तो जो मतलब जो रन स्टार्ट करेगा उसकी ज्यादा ड्यूटी हो जाती है कि वो केयरफुली उसको उससे ग्रिप करे, अदरवाइज नहीं तो अगर वो रनिंग करते करते लेगा तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो ट्रेनिंग होती है इसमें, ट्रेनिंग के अंदर ये करते हैं कि जो पीछे से जो बैटन देगा वो कम से कम उस एथलीट के साथ 5-7 मीटर आगे तक जाए, ताकि वो मतलब इतनी उसमें एनर्जी हो कि वो बिल्कुल उसको जो बैटन दे तो वो प्रॉपर टाइम पर दे। So we're looking at Tamil Nadu. They had a good start there. The Railways in lane 4. Railway is leading line, I think. The Railways, yes, that's why I said in lane 4. Didn't have a good start, Shakti, but the Railways are always strong in the relays. Trained together. Yes. और मेरे को लगता है कि प्राची जो एशियन गेम्स खेल के ये लड़की अभी जो अभी आगे जा रही है, तो मुझे लगा 2 एथलीट हमने देखे हैं ऐसे जो एशियन गेम्स खेल के और यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे जो है अपने एथलीट को मोटिवेट करता है कि आप जहाँ से भी आए हैं लेकिन कंपटीशन आप खेलिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ये कंपटीशन शायद टफ हो जाए, लेकिन अभी भी ये लीड में है रेलवे। I have a feeling that the finish is going to be a classic one, but she's got that lead. Yes. All leader up first. This is a wonderful lead. Yes. Wonderful lead. Was very difficult for the next team, which was Punjab. In fact, Punjab finished second. Tamil Nadu had a good start, but then somewhere down the line, it was the Railways who picked it up. क्योंकि रेलवेज के 4 के 4 एथलीट हैं वो काफी अच्छे हैं,
और ये तमिलनाडु और पंजाब, ये इनके एक दो एथलीट अच्छे हैं, बाकी एथलीट सारे एथलीट बराबर के होते हैं, जब जाके मतलब मुकाबला टफ हो जाता है. And that's the reason why countries like the United States and Jamaica Yes, sir. have already always excelled. The Jamaicans, of course, now over the last 8-10 years. So we had the women's 4x400. It will now be the turn of the men to be there. हम बात कर रहे थे एशियन गेम्स जो अभी हाल ही में खत्म हुए. शक्ति जी जी 29 मेडल्स. मेरे हिसाब से ये नहीं कि शुरुआत अब हुई है. शुरुआत तो 1948 से हुई है. जी जी जी. हमें दाद देनी पड़ेगी. जैसे थोड़े नाम मेरे सामने आते हैं, हेनरी रिबेलो, हाँ हाँ यस. मिल्खा सिंह जी, जी जी जी. गुरबचन सिंह रंधावा. जी जी जी. फिर बाद में अगर आप आ जाओ तो शिवनाथ सिंह, श्रीराम सिंह, एडवर्ड सिक्वेरा. जी जी जी. थ्रोइंग इवेंट्स में आप थे. जी जी. बाद में अनिल कुमार. जी जी. शायद मैं नाम थोड़े, क्योंकि इतने बड़े नाम, इतने नाम लेना मुश्किल है. जी जी जी. लेकिन विमेन में देखो आप, हरवंत कौर, सीमा अंटिल, कृष्णा पूनिया. जी जी जी. इन्होंने प्लेटफॉर्म ले दिया है, बेसिस ले दी है कि आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं. असल के अंदर यही होता है. और रेलवे 3.37. So the railways 3 minutes 37.82. Punjab 3 minutes 39.43. Haryana 346.50. Punjab in the second, a little surprised. ये सरप्राइज. आई थिंक हम सोच रहे थे कि तमिलनाडु जो है वो उसमें आएगा, लेकिन पंजाब की लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं. वो उनके हम बात कर रहे थे जो 1948 से लेके 47 से लेके आज जो हम मुकाम पे पहुंचे हैं, तो ये श्रेय मेरे ख्याल से 75 साल हमारे इंडिपेंडेंस के हुए. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत से प्रोत्साहन करते एथलीट्स को, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन को. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि स्पोर्ट्समैन भी कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में भाग ले लूं. बिल्कुल, क्योंकि अब तो जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स करिए. मैं तो स्पेशली आपको ये कहूँगा कि जैसे हमारा स्टेट हरियाणा है, हरियाणा के अंदर तो जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पैसा भी अच्छा मिलता है, आपको नौकरी भी मिल जाती है, और फिर ये पूरे नेशनल लेवल के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डायरेक्ट खिलाड़ियों से जो फ़ोन पर बात करना, उनको कंपटीशन से पहले मोटिवेट करना, और मेडल जीतने के बाद फिर उनसे बात करना, और मेडल जीत के आते हैं उसके बाद फिर गेट टुगेदर करना, ये बहुत बड़ी बात है. अगर प्राइम मिनिस्टर इतना इंटरेस्ट लेता है तो फिर जाहिर है कि मतलब हर डिपार्टमेंट्स के लोग भी लेंगे और पेरेंट्स भी लेंगे कि हमारा बेटा भी मेडल लेके आए, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी बात हो. तो ये बहुत बड़ी बात है. और अब इस बार तो हमारा एथलेटिक्स का तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सर इसमें. तो ये साइन है कि आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. Well, we all live in hope, and hope takes us to a next level. We now come to the men's 4x400. The national team in Budapest हाल ही में 2 minutes 59.05. 400 मीटर हमारी पुरुष की भी बहुत अच्छी टीम हमेशा अच्छी हुआ करती थी. अच्छी हुआ करती थी. और अब हमारी टीम ने 3 मिनट से नीचे का जो ब्रेक किया है, ये आउटस्टैंडिंग. आप ये देखो ना कि यूएस की टीम को मजबूर कर दिया देखने के लिए कि ये उनके लिए सरप्राइज था. वो आप टीवी पर आपने देखा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हमारी टीम ने जो कमाल किया है. तो ये अभी ओलंपिक्स के अंदर भी बहुत लोगों की नजर रहेगी हमारी 4x4 के ऊपर. और हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. 6-7 बच्चे जो है वो बिल्कुल अच्छे रेंज में 45, 44, 45 के बीच में है अभी. मोहम्मद अनस, राजीव अरोक्या. यस. The services team holds the meet record set in Kolkata of 3 minutes 06.63. C.K. Satyan is a familiar face in the starter's role or the starter's position. Remember, for the officials, the rules or updating yourself with the rules is so important. Yes, very very important. Rules. क्योंकि अगर बच्चा कभी गलती कर जाता है
तो कोच को और एथलीट को अपडेट होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए तो हमारी फेडरेशन टाइम टू टाइम जो है ना, ये जैसे हमारे लेवल 1 लेवल 2 और प्री लेवल के जो ये कोर्स कराती है उसमें, और फिर बाहर से एक्सपर्ट भी बुलाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है ये नॉलेज शेयर होता है। कोचेज़ के भी सेमिनार होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में, तो इससे अपडेट होते हैं हमारे बहुत से एथलीट कोचेज़। So unlike the women, the men's 4x400 final has all 8. Although I see lane 3 is vacant there, but no, lane 3 is not. There's the boy from the police. Punjab is in 1. Kerala is in 2. Police in 3. Tamil Nadu in 4. The services should be strong. They are drawn in lane 5. Likewise, the railways in 6. Haryana in 7 and Rajasthan in 8. The services, I'm told, they all practice at the Army Node in Hyderabad Pune also, sir. and Pune at the ASI. Yes, I Pune. The Army Node at the Golconda Fort, the Artillery Center, and the ASI also. Does the railways have a similar institution like the ASI? यस, रेलवे के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। आप जैसे अपना ये देख लो कि पटियाला के अंदर भी इनका ये कैंप लगता है, और इसमें अभी रायबरेली के अंदर सिंथेटिक ट्रैक हो गए। So the start of the 4x400 meters for men. तो उसमें जो है ये रायबरेली के अंदर भी इनका भी इकट्ठा कैंप लगने लगा है रेलवे का। तो रेलवे के अंदर तो बहुत ज़्यादा सेंटर हैं इसमें स्पोर्ट्स के, जैसे रेलवे के हैं, सर्विसेज के हैं। आजकल तो आप देख लो रिलायंस है, ओएनजीसी है, बहुत सी जगह ऐसी हो गई कि आपको मतलब प्रैक्टिस का अरीना मिल जाता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। So in 5, the services. In lane 6, the railways in the lead. 1 lap, and they will have to continue to do that till the bend of the second. Once fallen back, the services have taken a slender lead. I don't know whether Shakti, that lead is going to stand them in good stead. नंबर 2 जो है टीम में ये बराबर, हाँ यस, नहीं रेलवे अभी लीड में है। So has the lead changed there? Is it the services still? Oh, services आ गया, yes. The services still in the lead, as he will now come into the inside after the bend of the second lap. You're looking at someone close on his heels, but the services, Shakti, are very, very strong. Yes, sir. Service is very strong. But the lead is being shortened now. और हमें पता है कि 400 मीटर में जिनके पास जो लास्ट 50 मीटर की अच्छी फिनिश है, वही वो चेंज कर देता है पोजीशन को। बिल्कुल बिल्कुल, यह यू आर। अभी देखो ये जो है अभी लीड काफी कम हुई है सर्विसेज की, और ये पीछे जो दूसरी टीम जा रही है, लेकिन फिर भी सर्विसेज अभी भी लीड पर है। Well, number 2 seems to be good there. He's pushing the services. कभी लगता है कि ये जो लीड है करीबन 4 या 5 फीट की या 1 मीटर की बहुत कम होगी है, बहुत कम, लेकिन कभी लगता है कि ये इतनी शॉर्ट है कि उसको नंबर 2 कवर कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो नंबर 2 पर जो है वो उसको एडजस्टमेंट होती है कि बंदा थक गया, तो उसके आइडिया से दौड़ता है कि इसको मैं 10 मीटर और दौड़ने दूंगा। अब ये देखो कि ये लेकिन सर्विसेज स्ट्रांगली आगे जा रहा है। Yes, it's number 5. Will the services have that final strength to finish it off? That's a big lead now. He seems to be very strong for the services. They were drawn in lane 5. They had the wonderful advantage. Oh, he's catching up. Number 2 is surely close on his heels there. This looks to be a good finish. Yes, sir. Yes. This looks to be a very good finish. That's the beauty of a relay. Does he have the strength? Is that the railways? No. अब क्लियर होगा, फर्स्ट आएगा। Yes, he does it. With there you are. That's the services. Pick up
the gold medal here in the 4x400 meters. मेरे ख्याल से जो advantage services के, so we'll give you the results of the 4x400 meters for men. That's not the way it ended. The position will change when we get the timings. But मैं बात कर रहा था कि जब उनके यहाँ रिक्रूट होता है सर्विसेज में, तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ओवरलुक नहीं करते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. मेरे ख्याल से जो रेलवेज या ओएनजीसी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओवरलुक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं सर, इसमें ये है ना कि जैसे आर्मी के अंदर क्या है कि पहले जो उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है वहीं एथलीट स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो कांस्टेबल सिपाही लेते हैं और सिपाही की ट्रेनिंग 1 साल होती है. तो 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें नेचुरली उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जॉइंट्स की वो हो जाती है, और उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो लगातार रेगुलर होती है. रेलवेज के अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है वो नेशनल लेवल का एथलीट को हम रिक्रूट करते हैं, और उसके बाद में जो एथलीट खुद के ऊपर मोटिवेट होता है वो अच्छा करता है. अदरवाइज कुछ एथलीट ऐसे भी होते हैं जो रिक्रूटमेंट होने के बाद में अगर इंजरी होगी तो उसकी वो फिर इंडिविजुअल उसके ऊपर आ जाता है कि वो आगे स्पोर्ट्स करेगा या नहीं करेगा. लेकिन आर्मी के अंदर अगर आप मान लो आप इंजर्ड भी हो गए हैं और जॉब कर रहे हैं तो वो इतनी टेक केयर करते हैं कि आपको आपकी इंजरी को हील करेंगे. लेकिन अगर जैसे रेलवे का हम नेशनल चैंपियन एथलीट लिया है, अगर उसको इंजरी होगी, इंजरी होने के बाद उसको 30 डेज की लीव भी मिलती है, तो उस टाइम पर अगर वो ये फील करता है कि मैं थोड़ी सी रिकवरी कर लूं, बस वो रिकवरी के चक्कर में फिर पीछे हट जाता है काम उसका. We are back to the triple jump now. So yes, there you are. The SSCB 308.08, Tamil Nadu 309.09. That's a surprise. Yes sir, surprise. Because I thought the railways were leading Mm-hmm. at some point of time. And I mean, leading, they were in number 2 position. But Tamil Nadu has surely done well to pick up the silver, 309.09. And Shakti did mention about the overall championships. The 4x400 relay makes such a huge impact in the ultimate points, because you could have a situation where just a few points separate one state and the other. Yes sir. We now have the triple jump for the women. Renu of the railways. ये एक नया जो मैं ड्रेस की जो बात कर रहा था, तो फ्लोरेंस ग्रिफिथ योइनर से शायद ये शुरू हुई. लंबे लंबे नेल्स और कलरफुल नेल्स. मुझे याद है एक पैर पे उसकी फुल थी, एक हाफ था. तो एथलीट्स उनको कॉपी करने लगे बहुत से. उसने तो काफी चेंज लाया ना स्पोर्ट्स के अंदर. उस टाइम पर अगर हमारा कोई एथलीट देखता था तो सरप्राइज करता था कि ये किस ड्रेस में कैसे दौड़ते हैं. अच्छा, वो दूसरे एथलीट के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है. और हम आज ये भी देखते हैं कि कई कई स्पोर्ट्समैन 2 अलग कलर के शूज पहनते हैं. हाँ, बहुत ज्यादा. हेयर भी कभी कर लेते हैं. मेरे को एक बार ऐसा लगा, जैसे हम एथेंस के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में थे वागले साहब, तो एक बंदा डेकाथलीट का चैंपियन था, उसने व्हाइट बाल कर रखे. तो हमारे साथ में जो मैनेजर था, ये अपना बनर्जी, दादा बनर्जी थे. मैंने कहा मुझको, दादा ये बूढ़ा आदमी मतलब इस पे, वो बोले बूढ़ा नहीं है, इसने कलर कर रखा है. अच्छा, वो कलर ऐसे था कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि इसके अच्छा बाल भी बिल्कुल छोटे छोटे थे. अच्छा, तो वो ये बूढ़ा आदमी बाद में पता. अच्छा, हमें तो इतना भी आइडिया नहीं था कि ये इतना व्हाइट कलर कर लेगा, और कई लोग 2-3 कलर कर लेते हैं. तो ये तो आजकल एक नॉर्मल हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड. मलाला अनुषा ऑफ आंध्र प्रदेश इन द ट्रिपल जंप, hop, step and jump. 14 of the jumpers. The run up on the runway. मैं हमेशा लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में कहता हूं कि हवाई जहाज जैसे आपको रन अप करना पड़ता है. यस, बिल्कुल. देखो उसका स्टार्ट जो होता है वो वैसे ही है.
और फिर वो एक्सेलरेशन करके जो हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, यस, तो वैसे ही यहाँ पर अपने बोर्ड के थोड़े से पीछे इट्स गुड जंप 13.40, यस. yes, very close to 13.78, which is a meet record. So she should be in medal contention. Celebrating the victory of Mama Bengaluru Kunal Joy winning the gold at Asian Games and also silver at the Asian Championship. We also congratulate हम हमने वो बात नहीं की कि सैक्रिफाइस कितना करना पड़ता है आप लोगों को इस मुकाम पे पहुंचने के लिए. ये नहीं कि आप ओलंपिक्स में टिकट मिल गया आपको, एएफआई ने कहा चलो आप ओलंपिक्स में चले जाओ या एशियन गेम में चले जाओ या कॉमनवेल्थ गेम में चले जाओ, तो उसके पीछे जो सैक्रिफाइसेस होती है बहुत ज़्यादा होता है सर. और हर एथलीट के साथ है. देखो, आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह सकते हैं. एक 10 साल का पीरियड ऐसे होता है कि अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपके बच्चे कब जवान हो गए ये पता नहीं लगेगा. 12.12 नॉट गुड इनफ फॉर अंजलि सी. और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स कब बूढ़े हो गए, क्योंकि जब बच्चा 20-22 साल की एज में आता है तो पेरेंट्स 50 के आसपास हो जाते हैं. तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है, अभी काले बाल हैं, दाढ़ी मुझके, और जब वो चैंपियन बन के आता है देखता है पापा तो सफेद हो गए हैं. ये भी एक मतलब चीज का फर्क लगता है. Melva George from the police. The white flag does go up. Yes, plenty of sacrifices. यस सर, बहुत ज्यादा. A normal child who is just studying, शाम को छेड़छाड़ी की. बिल्कुल अलग अलग आज कॉफी शॉप से वहां जाके बैठ गए. बिल्कुल आपने कुछ बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया. सर, खाने पीने पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है. जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज़्ज़ा, बर्गर है, ये तो सारे की सारी फैट वाली चीज़ें हैं और यूजलेस है. इसके अंदर कोई पावर की चीज़ नहीं है. तो इसलिए ये अच्छा बच्चों के लिए टेस्ट की चीज़ है. तो ये टेस्ट भी एक स्पोर्ट्समैन का बिल्कुल उसमें अलग ही रहता है. वो बाई चांस कभी खाता है. अभी हमारी एक एथलीट थी जो मतलब कार्तिका गौतमपानी ऑफ द रेलवेज. तो उसने मतलब जो है पीएम साहब को भी बोला था कि मैंने पिज़्ज़ा खाए कितना टाइम हो गया, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उनका क्या है. तो वो कंपटीशन के बाद उसने जो है वो पिज़्ज़ा खाया. और ये छोटी छोटी बातें हैं. बड़े प्लेटफार्म पर बच्चे इसलिए बोलते हैं कि वो उस चीज़ को कितना मिस करते होंगे जब वो ड्यूरिंग उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है. लेकिन वो जो फल मिलता है, हाँ यस, ये तो है. और ये फल सबको नहीं मिलता है. सर देखो, स्पोर्ट्स आप देखो, आप ओलंपिक्स में पैसे दे के जा सकते हैं, हाँ है ना. आप ओलंपिक्स में हवाई जहाज से फर्स्ट क्लास 350 was Kartika 12.51, not good enough. Earlier we saw someone in the 13 range looking at P. Babisha of Tamil Nadu. आप फर्स्ट क्लास से फ्लाई कर सकते हैं. जी. आप 5 स्टार होटल में जाके रह सकते हैं. लेकिन जो एथलीट को जो गर्व मिलता है, वो तो एक अलग चीज़. ओलंपिक विलेज में रहना, नेशनल कलर जब वो पहनता है तो वो तो उसके लिए पूरी जीवन के लिए एक प्राइड होता है. वो विलेज में रहना, हाँ. अलग अलग एथलीट्स के साथ दोस्ती करनी. वर्ल्ड के सारे एथलीट आपको देखने को मिलते हैं सर विलेज के अंदर. अगर आप ओलंपिक्स में जाते हैं तो दुनिया के वो प्लेयर जिनको आप टीवी पर देखते हैं वो आपके आसपास खाना खाते हैं, वो वहीं घूमते हैं. मुझे अभी भी पता है कि एथन स्मिथ दैट वाज अ क्लीन जंप देयर. मुझे अभी भी पता है 2004 में जब मैं एथेंस गया था, तब पहली ओलंपिक्स कवर करने मेरी, तो रॉजर फेडरर वहां पर ऐसे घूम रहा था जैसे कि वो बगीचे में घूम रहा है. हाँ बिल्कुल. आजू बाजू में कोई नहीं था उसके. नहीं, बिल्कुल. और बहुत से लोग कहते थे ये तो दिख रहा है रॉजर फेडरर जैसे, लेकिन मुझे संकोच था कि वो है कि नहीं है. Yes, क्योंकि अकेला घूम रहा है, कोई नहीं आसपास में. शर्वरी परुलेकर. और वहीं पर अगर आपको याद हो कि अमेरिका की जो बास्केटबॉल की ड्रीम थी, वो वहां पर थी. यस, बिल्कुल. इतनी सिक्योरिटी थी उनको, क्योंकि सारे बड़े नाम थे, बहुत बड़े, सारे बड़े नाम और थे. वो तो ये अमेरिकन जो बास्केटबॉल है ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं लोग, और बहुत मेन टीम होती है इनकी. शर्वरी परुलेकर.
So yes, the dream after you give sacrifices, it's amazing. It's absolutely amazing. It makes you feel that, and the best thing, Shakti ji, is 12.96, so very close to that 13 mark यस for Sharvari Parulekar of Maharashtra. वागले साहब, एक लेवल पर आने के बाद में आपको 10 साल का पीरियड लगता है। इंटरनेशनल लेवल पर आपने कहीं कोई मेडल लेना है तो उसमें 10 साल आपको मतलब जो है बिल्कुल डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन, पूरा मतलब 3 Ds का जो फार्मूला है वो आपको रखना ही पड़ेगा। हजारों शुरुआत करते हैं, हाँ, बहुत से गिर जाते हैं, बहुत बिल्कुल। से पिछड़ जाते हैं। नेशनल चैंपियन बनने के लिए भी आपको कितने बिल्कुल। लोगों के ऊपर आना होगा। बिल्कुल। एशिया चैंपियन बनेंगे तो पूरे एशिया के अंदर आप बेस्ट हैं। अगर ओलंपिक चैंपियन है तो फिर दुनिया के आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं किसी भी इवेंट के। और ऐश्वर्या 421 तमिलनाडु। और उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि देखिए, एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग, यस, यानी इस साल डायमंड लीग में तो फाइनल में पार्ट नहीं लिया क्योंकि उसे एशियन गेम्स ले लेना था, और एशियन गेम्स के 2 टाइटल्स। 2 टाइटल, यस। तो अगर हम भारत के अलग अलग क्षेत्र से स्पोर्ट्समैन को देखेंगे, लिएंडर पेस, अभिनव बिंद्रा, यस, विल्सन जोन्स बिलियर्ड्स में, यस, 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 गीत सेठी, पंकज अडवाणी, नाम अनेक है। जी, जी, जी। एक पूरे 5-6 घंटे लगेंगे नाम लेने के लिए। मैं तो यहाँ पर क्रिकेट की बात ही भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लेंगे खजान सिंह टोकास, यस, 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 जिन्हें फर्स्ट मेडल मिला था एशियन गेम में, यस, यस, और उनमें अगर आज नीरज चोपड़ा को आपको डालना है, वी लुक एट दैट विथ 569 और 369, भैरवी रॉय ऑफ रेलवेज। जब स्पोर्ट्स का इतिहास लिखा जाएगा 100 साल के बाद, तो आप नीरज चोपड़ा को कहाँ रखेंगे? नीरज चोपड़ा तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि कोई भी दुनिया का ऐसा टाइटल नहीं है जो उसके पास आज नहीं है। जूनियर वर्ल्ड से लेके सीनियर वर्ल्ड तक, ओलंपिक, एशियन गेम्स, तो अब आप उससे बेस्ट एथलेटिक्स के अंदर तो कोई है ही नहीं ना। और टोटल एथलेटिक्स को भी अगर आप देखें वर्ल्ड के, ही इज नंबर 1। 13.29 doing well there was Bhairavi Roy of the Railways, Niharika Vashisht of Punjab. आज अगर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, फिनलैंड है, जो अच्छे जैवलिन थ्रोअर्स प्रोड्यूस करते हैं, या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मन्स है, पाकिस्तान का जो नदीम है, काफी अच्छा बन के ये आया। शायद जब नीरज चोपड़ा को देखते होंगे, अगर एक रेस्टोरेंट में 6 लोग बैठे हैं और नीरज चोपड़ा शायद थोड़ा लेट आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेट आएगा क्योंकि वो तो राजपुताना राइफल्स का है तो डिसिप्लिन बहुत ही होगी, यस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं लेट आ गया तो वो जो 6 एथलीट्स वहां बैठे हैं, टॉप एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो खड़े रह के कहेंगे मास्टर आ गए। यस, मास्टर आ गए। यस, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, मास्टर आ गए, क्योंकि उसकी जो स्किल है वाकई मास्टरी है, और परफेक्ट मास्टरी है, कॉन्फिडेंस वाली मास्टरी है। एक तो होता है ना चांस लग गया, वहां चांस की कोई वो इशू नहीं है, वो तो 100% मास्टरी है। The triple jump is on. We are now attempting the third of the jumps in the triple, the hop, step and jump. 12.05, not good enough. We've seen the 13.36. Anything over 13, I think, would be looking at the competition out here. Anything over 13 should be good enough to get you the 1, 2, 3s. Yes, 1, 2, 3s. हॉप स्टॉप जंप जो है ना, ये पहले बोलते थे सर इसको। Yes, ये आपने जो बोला तो मुझे याद आया कि वो मतलब हमारे जो सीनियर एथलीट थे वो ट्रिपल जंप नहीं बोलते थे, हॉप स्टॉप जंप। Pavitra of Karnataka.
That's the girl. 193. The shadows have lengthened here. ये स्टेडियम श्री कंटेरवा स्टेडियम में आपकी कुछ याद है? यस सर, कंटीरवा स्टेडियम के अंदर मेरी तो बहुत अच्छी यादें हैं। 2000 के अंदर, रेनू ऑफ द रेलवेज। 2000 के अंदर एशियन रिकॉर्ड मैंने यही किया था। वंडरफुल वंडरफुल। और मांडिया के अंदर 2 बार मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था शॉर्ट पुट और डिस्कस का, विद इन 1 वार्म अप। तो ये साउथ के अंदर मेरा बहुत अच्छा ये लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं बेंगलोर आता हूँ वो याद ताजा हो जाती है सर। नहीं, यादें हर क्षेत्र में होती है। दैट वाज द फाउल ऑफ द सेकंड। यादें हमेशा अलग अलग जगह, पर्टिकुलरली हर एक को एक प्यारी जगह होती है। हमें भी, हम जब कमेंट्री करते हैं तो जहाँ पर, जैसे मैं कहूँगा यहाँ, ये भी मेरे लिए एक थोड़ा सा लकी ग्राउंड है। लकी स्टेडियम है, नेशनल गेम्स के यहाँ पर। हाँ, नेशनल गेम्स 94 ग्रांड प्री किए यहाँ पर। पागल साहब, 94 नेशनल गेम्स के अंदर मैं बेस्ट एथलीट था। बिल्कुल याद है मुझे। यही। याद है मुझे। ये तो 2 स्वीट मेमोरी होगी, नेशनल गेम्स की और उसका एशियन रिकॉर्ड। बिल्कुल। मुझे वो जो राइट साइड में जो स्टेडियम है, याद है कि 100 मीटर्स फाइनल में रचिता मिस्त्री, वो जो सामने जायंट स्क्रीन है उसको देख रहे थे कि फोटो फिनिश थी। 94 से लेके आज 2023 में हम पहुंच गए। 23 + 6 31 साल। बहुत लंबा पीरियड हो गया। बिल्कुल। लेकिन लगता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम इतनी स्पीड से जाता है, पता ही नहीं लगता। अब कई जो मेरे साथ के खिलाड़ियों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार तू तो बूढ़ा हो गया, लेकिन खुद जब तक शीशे में नहीं देखते तो पता नहीं लगता। 13:36 13:36, so that's good. Yes, competition will heat up. The triple jump for the women still on. Anjali C of Karnataka. इसके बाद हम मैं चंडीगढ़ में जाऊंगा। हाँ, अंडर 23 आप आ रहे हैं? यस, चंडीगढ़ आएंगे अंडर 23। तो अंडर 23 वो क्योंकि हमारे वहाँ काफी एथलीट अंडर 23 के अंदर, एनसीओई पटियाला से। वंडरफुल सिटी। बहुत वेरी वंडरफुल सिटी। I love the paratha there and the पाल सिंह का ढाबा। यस सर। और वो जो स्टेडियम है, चंडीगढ़ का जो स्टेडियम है सर, अगर आप लेटेस्ट कब गए हैं वहाँ? काफी साल हुआ। काफी साल हो। जब वहां आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यूरोप के किसी ग्राउंड में है। इतनी अच्छी सिचुएशन में और इतना अच्छा ग्राउंड है। मैं तो अभी पीछे जो ग्रांड प्रिक्स हुई थी उसमें था। बहुत अच्छा ग्राउंड है और लगता है कि एक इंटरनेशनल कंपटीशन हो सकता है। काफी दोस्त है चंडीगढ़ में जो आर्मी के वेटरन्स है। तो 3 दिन में शायद कितने लोगों को मैं मिल पाऊंगा पता नहीं मुझे। आपके आर्मी के बहुत दोस्त हैं। बिल्कुल। वेस्टर्न कमांड में जो आर्मी का वेस्टर्न कमांड है वहाँ पर काफी दोस्त है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 350 वो तो गेट टुगेदर कर लेते हैं जब आप जाएंगे। बिल्कुल। कार्तिका गॉट दपानी, पंजाब की, और रेलवेज की, करेक्शन, शी इज फ्रॉम द रेलवेज। आपने नाम लिया जो मुझे लगा कि ये नाम पंजाब में तो नहीं है। कभी कभी आपके पेरेंट्स वहां पर सेटल डाउन होते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। यस, बहुत कम है। लेकिन आजकल तो जो है पंचकुला, मोहाली, यहाँ पर काफी आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो रिटायर्ड जो आते हैं, वो मतलब बहुत है देश के हर हिस्से के लोग। जिसकी पोस्टिंग थोड़ा सा लंबे टाइम हो जाती है उसको अच्छा लगता है, बच्चों की स्टडी वहां हो जाती है। क्लाइमेट अच्छा है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हालांकि सिर्फ मेरे ख्याल से समर के 2 महीने गर्मी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा होता है ना, गर्मी अगर दिन में गर्मी है 2-3 दिन तो फिर बारिश आ जाती है।
पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं. Babisha, Tamil Nadu, well planned city. La Corbusier, यस. who planned the city. अगर ऊपर से देखें तो बोलते हैं चंडीगढ़, जो हम हिंदी में लिखते हैं, वो उसी डिजाइन के ऊपर उसको बसाया गया है वैसे ही. You got to be absolutely perfect in your three of the techniques that you need to adopt there. Unlike the long jump where you just hit the board and go through, यस. in the triple jump, if you miss the hop, it's not then easy to do the step and the jump. If you miss the step, it's not easy to do the final and the बिल्कुल. takeoff. ये तो आपका रिदम ऐसा होना चाहिए कि आप सारे जंप पूरे अंडर कंट्रोल हो आपके. Sharvari Parulekar of Maharashtra. मुझे याद है एक ज़माना होता था कि अभी भी शायद है कि चंडीगढ़ में 5 माले की या 6 माले के ऊपर बिल्डिंग अलाउड नहीं है. अब शायद थोड़े से मोहाली में स्काई स्क्रेपर्स आने शुरू हो गए. हाँ, मोहाली में है कुछ, मोहाली और पंचकुला के अंदर शायद कुछ रिलैक्सेशन होगा. और दूसरी जगह वहाँ पर पास में वो क्या है, जिकरपुर, जीरकपुर, जो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ के जो सैटेलाइट हाँ, टाउन्स बने, जैसे दिल्ली में आउटर दिल्ली, जैसे दिल्ली में नोएडा है हाँ, या हाँ, yes, गुड़गांव है इस साइड में, ऐसे ही तो वैसे ही चंडीगढ़ में जीरकपुर भी बहुत अच्छी जगह है. वहाँ पर भी बहुत अच्छे मकान हैं. ये जो फ्लैट्स हैं वो बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं. So we're looking at, remember, the Athletic Federation of India will come to you live with the under 23 championships in Chandigarh, 20th to the 22nd of this month. Yes. I'm going to fly from Pune directly, not from Bombay, after the World Cup match between India and Bangladesh. Oh, great. So I'm doing the commentary in that match. Oh, great, sir. And then from Pune to Chandigarh, cricket se athletics. क्रिकेट से एथलेटिक्स. 4-1 is our Aishwarya of Tamil Nadu. और ये जो टेक्निक अब या जो एक पैटर्न आ गया है, दोनों हाथ से चीयर करो, मुझे यस, क्राउड को प्रोत्साहन करो, वो एथलीट मोटिवेट होता है, मोटिवेट होता है. पहले नहीं हुआ करता था. पहले भी था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना आजकल हो गया. अब तो सिस्टम चेंज हो गया सर, मॉडर्न हो गया सिस्टम. अब एथलीट अपने आप को प्रेशर फ्री करता है. इससे आप क्लैपिंग कर रहे हैं, खुद क्लैपिंग कर रहा है, तो एक प्रेशर फ्री हो जाता है, वो नेचुरल उसमें आ जाता है बंदा. अगर आप जाएं और वैसे सीधा जंप करें तो आपके अंदर कहीं न कहीं प्रेशर फील रहता है. तो अंदर ग्राउंड में जाने के बाद में देखो कई बॉल से जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, वो प्रेशर को फ्री करते हैं. ऐसे ही जंप्स के अंदर, और जंप्स के अंदर तो बहुत ज्यादा है. Bhairavi Roy of Railway, she's done well. Remember, she got to, I think, 13.36 earlier on. Mayuka Johnny's national and meet records still stand. Records are meant to be broken, and that's why Shakti Singh's record was broken. किसने ब्रेक किया था आपका रिकॉर्ड शॉर्टपुट में? मेरा शॉर्टपुट के अंदर रिकॉर्ड ओपी सिंह ने किया. ओपी सिंह ने. बिग मैन. यस, वेरी बिग मैन. Oh, that's nice. That looks good. Oh, foul. That looks, foul. Very unfortunate. Near about 14 meters. Looks very close to 14. Yes. You're right. Maybe record. Would have been a meet record, if not a national record. फाउल जंप नहीं होता तो मीट रिकॉर्ड के आसपास का जंप, बहुत अच्छा जंप था. मुझे अभी भी याद है पटना में आपके साथ और ओपी के साथ फोटो निकाला था. मैं तो ऐसा लग रहा था कुछ 2 फीट 1 इंच का लड़का हूँ. Yes, ओपी सिंह कराना. He's a wonderful boy. Yes, sir. The last of the athletes, the 14th one in the triple jump final for women, Niharika Vashisht of Punjab. You know, these days, Shakti ji, a lot of these athletes
can also pass off as models or actors. यस, Uh, ये तो है सर. यानी मैं ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ कि ये एक गेम की एम्बेसडर बनती हैं यस, कि बिल्कुल. ना सिर्फ एक अच्छी एथलीट होते हैं, लेकिन देखने में अच्छी होती है, बिल्कुल. और इसकी वजह से जो एक लाइवलीनेस आती है. असल में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, अब जैसे ओलंपिक्स के अंदर लगा लो आप, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और यूरोपियन चैंपियनशिप होती है, ये सारे के सारे एथलीट्स को हम टीवी के ऊपर लाइव देखते हैं, तो उनका जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट करते हैं बच्चे. तो ये चीज़ें तो मतलब अब पहले उससे थोड़ा सा दूर रहते थे, तो वो जो पुराने खिलाड़ी होते थे तो वो उस चीज़ से थोड़ा सा वो सिस्टम भी अलग था. लेकिन आजकल तो बताया ना, पूरा वर्ल्ड छोटा हो गया. बिल्कुल, द वर्ल्ड हैज श्रंक. यस सर. मुझे अभी भी याद है, शक्ति जी, आपने श्रंक की बात की, तो अगर मुंबई से, या तब बॉम्बे हुआ करता था, अब मुंबई है, लेकिन अगर आपको बॉम्बे से पुणे जाना होता था ट्रेन से, तो मेरे पिताजी करीबन 1 महीने पहले टिकट बुक करते थे. यस. आज हम बालेवाड़ी में सवेरे जाते हैं, इवेंट कवर करके रात को वापस आ जाते हैं, अगर ग्रांड प्री है. यस. अगर कोई ऐसे इवेंट है, तो जैसे आपने कहा कि द वर्ल्ड हैज श्रंक. यस. अब रोड अच्छे हो गए हैं. अब ये देख लो ना कि अभी हमारे जो एनसीओई के एथलीट हैं वो बाई ईयर आते हैं, बाई ईयर जाते हैं, और हम ये सोचते थे कि जब कभी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे तब हवाई जहाज में बैठने का मौका होता था. तो अब बच्चे कितने मतलब उस चीज़ को कंफर्टेबल हो गए कि उनको इस चीज़ का कोई मतलब प्रेशर नहीं है कि हम हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे और वो कैसा रहेगा. यहाँ तो जब इंटरनेशनल कंपटीशन होता था तो दिल्ली से एयरपोर्ट जाते थे तो हम चौंधिया जाते थे कि कहाँ आ गए. लेकिन अब बच्चे जो है सुबह, हाँ, चंडीगढ़ से सीधा बेंगलोर बाई एयर जाएंगे, यहाँ से कंपटीशन खत्म हुआ सीधा पटियाला बाई एयर जाएंगे, वहाँ से टैक्सी से वहाँ जाएंगे. तो ये जो मतलब ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज टॉप के एथलीट को मिलती थी, अब ये बिगिनिंग के एथलीट को मिलती है. Very good, excellent. So, if you're watching this Athletic Federation of India's YouTube channel, remember yes. there are opportunities. यस सर, बिल्कुल. And opportunities come to the people who have grabbed those opportunities with both hands. यस यस, बिल्कुल. We're now shifting our attention to the high jump for men. वो हाई जंप बता रहे, हाइट पता नहीं है. हाइट का तो उधर से बोर्ड वगैरह नहीं लगा रखा सर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है नहीं. For the events long jump and 100-meter hurdles, and the director of NEV Sports, Arjuna Awardee, Mrs. Rita Abraham, on the victory podium of shot put. It is Abhilash Saxena of Railways getting the bronze. Hello. So it is the presentation of the shot put for men. Abhilash Saxena of the Railways gets the bronze. The winner of the silver medal is Parth Lakra, representing Delhi. Parth Lakra, Delhi, getting the bronze. And the gold medal winner is Sahib Singh of ONGC for a clearance of 80.96 meters. And ONGC getting the gold. साहब सिंह. So that's Saab Singh of ONGC getting the gold. Sorry. Okay, everyone look up. Reet Abraham to the left of the picture frame. Former heptathlete, You guys be there. 100 hurdles. Be there, be there. She is here as a part of the NEB, who have been kind enough to support the 62nd
नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप्स, एक ज़माने की बहुत अच्छी हेप्टाथल। बहुत बहुत अच्छी एथलीट, बहुत आउटस्टैंडिंग। So thank you, Shakti, for you've been with us for close to 2 hours. It's been a pleasure talking to you, chatting with you, and I always feel honored, to talk to past athletes. You're one of them. I've been blessed. वो कहते हैं ना कि एक खुशकिस्मती होती है कि आपके इवेंट्स की कमेंट्री करीबन 10 15 20 साल की, और उसके बाद अब यहाँ पर कमेंटेटर्स बॉक्स में हमारे जो दर्शक है AFI के, तो उन्हें आपका जो ज्ञान है, आपकी एक्सपीरियंस है, शायद ज्ञान मे नॉट बी द राइट वर्ड, बिकॉज ज्ञान का बहुत लोग और कुछ मतलब निकालते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपीरियंस है, तो वो आपने जो शेयर किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चंडीगढ़ में जरूर मिलेंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर दिल से, कि पहली बार आपने मुझे कमेंट्री बॉक्स में बुलाया और मुझे कमेंट्री करने का एक्सपीरियंस दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Live action continues with the women's one more final out there in the center, and that is the discus throw for women. "21 starters in the discus. The triple jump still continues. We are now into the final. We are now into the final stages of the triple jump for women. Sharvari Parulekar of Maharashtra Gold in 400 meter relay winner. Team Railway, Team Punjab, and Team Haryana. Railway Team Sports Manager, Team Road, thank you for holding 400 meter gold medal.
So the triple jump, which started at 4:30, has been on for an hour and 15 minutes. We weeded out the ones who were at the bottom of the ladder. P. Bapisha of Tamil Nadu. Sonia Sivakumar, Florence Barna and Prati from Railway. Please come on stage for medal ceremony. So this is round 4 where P. Babisha of the Tamil Nadu starts with a foul jump. Barbie Roy of the Railways. Team Haryana, Rachna, Mami Nandal, Shivani and Santosh Kumari. Railways, Punjab and Haryana. Kindly come on stage. This is the last time we are calling for medal ceremony. Later we will have to collect the medals over time and not on The hop, step and jump 12.85. The meet record 13.78. Mayuka Johnny. The national record 14.11. calling for the next 44 minutes from men. Malala Anusha representing Andhra Pradesh. Men going to 400 meters arena. SSPC, services team, Tamil Nadu and Rajasthan. Kindly come on stage. Rajasthan is already Doing well there to get to 13.22. Tamil Nadu team who ran the 400 meter relay. Kindly come on stage. Please do not stand below. Come on stage. Both men and women, come on stage. Only then we know that you are good. Do not stand and keep talking. We will think that you are not. C. Anjali of Karnataka. All these triple jumpers, I'm sure, were in the close to 13 bracket. That's the number which might get you somewhere close to the figure of a medal. The triple jump, although it is an attractive event, you must be aware of the intense physical demands that the training for this event places upon the athlete. The triple jump up or the triple jump places considerable stress on the heel, the knees, the hip. Not good enough. 12.13 is not good to get a medal position. The joints of the feet. And that's why they say, consequently, the intensity of training should be increased slowly and progressively in the triple jump. Pavitra, Karnataka. In fact, no instructional period should be devoted solely to the triple jump. These are all the girls or the women, 12.26. We are now in round 5. In fact, to ease the shock of repetitive jumping and bounding, have athletes perform on surfaces that provide adequate cushioning, such as grass or on mats.
This is the last call for 4200. Team SSCB and Team Tamil Nadu, kindly come on stage. Team Tamil Nadu or Team SSCB. We're nearly there at 13, 12.84 is Kartika Gotan Dapani of the Railways. Sharvari Parulekar, Maharashtra, should be into a last attempt. Or is this the fifth? Yes, that's the fifth attempt. Walks through. For the triple winners of 4 times 400 meters race. Our guest of honor for this award function is the General Manager of Bangalore Metro, Mrs. Divya Basu, IAS, and ardent supporter and promoter of sport. Our guest of honor is being accompanied by the Director of Aviation Sports, who is also the Indian international and has won 18 medals, 3 championships. Renu, the Railways. The red goes up. Could have been a good jump there for her. On the victory podium of 4 times 400 meters relay, it is the team Haryana backing the And during the indoor training for the triple jump, gymnastic floor exercise mats are the excellent for this purpose. Heel pads provide additional protection. The medal presentation for the 4x400 meters for women. The silver medal winning team is semifinal. The silver medal goes to Punjab. Did well to pip the Railways. And Supreme Tom. So it's a combination of the 4 corps which have got them the silver medal. Winning team is Railways for having reached the timing of 3 minutes 37.82 seconds. So 337.82. Sonia, they take the gold. The Railways, a good combination of the 4 of them. Awesome. I love this, Reet Abraham making sure that everyone is in position to feature in the photograph, which would be one of their pride photographs Here, for the 3 teams. Yeah. She herself has been having the pride of a similar situation where she stood on the podium. मैं एक फोटो लेता हूँ. The triple jump continues, but now with the red flag there. Services team manager or coach. Team services manager or coach. Please send the winners of 400 meter relay for medal ceremony.
एक्चुअली उसकी कलर थोड़ा सिमिलर है, सुबह भी ऐसे हो गया सर, कंफ्यूजन हो गया कोई शूट होता है सिंगल सिंगल लेना सिंगल मैं कह रहा सिंगल सबके साथ नहीं कोई बात For this award function is an on the victory podium of 4 times for the biggest relay for men. It is the team Rajasthan winning the bronze medal for having such a timing on. So Rajasthan getting a bronze in the 4x400 meters relay for men. Being represented by Mukesh Sai, Suresh Punya, Ankit Madhu and D. Chowdhury. Reet Abraham doing the honors of presenting the medals. Couldn't have asked for anyone better. Reet Abraham, former international, heaps of medals, heaps of records, heptathlon, the 100 hurdles, the long jump. And it is the team Tamil Nadu winning the silver medal for having around 3 minutes. Tamil Nadu gets a silver. Represented by They started off well, Sharan Shankar, S. Nagaarjunan, and yes, but they had to be content with the silver behind the services. and one of the gold medal winners of the team services. Services for having around 3 minutes 08.08. The services take the gold. Actually, name Himanshu, Jidit George, and Anvil Singh. Okay, 2 people can stand up. No people can come out. भैया एक बार अरेंज करो Photographers, please be careful as triple jump event is in progress yet. Okay, everyone look here. Winners be there. Be there. We'll take one more picture. Okay, now for the video.
Congratulations, winners, and we thank our guest of honor, Archana Awardee, and her long career span in athletics and who continues to win medals in the Asian World Masters League. We thank the for having all of the winners, and we do thank Mr. Prem, the director and operator of the Indian for having करा लिया ना कल है ना आपका इवेंट भी फिक्सेड नहीं कर रही है तो कब क्यों नहीं कर रही है वो सोनिया और फ्लोरेंस करेगी अच्छा अच्छा ठीक है कब निकल रही है कल शाम को ठीक है मैं रूम पे आके मिल लेना रात को ठीक है ना. So while the triple jump continues here for the women, I'm joined by someone who's been at the forefront for an event which we all talk of, Isenbieva of Russia, but this girl has done wonders as far as the nation is concerned. VS Sureka, athletic family as I keep on calling them, Ranjit Maheshwari, her husband, a triple jumper, and she a pole vault. When you're watching these athletes taking the triple jump, you watch them do the pole vault, Sureka, what memories came back to you? Good evening. Actually, it's a wonderful moment since sports is our passion and what we are is through sports. So, whenever we see the young athletes doing our events, especially triple jump and pole vault, we remember our own cherishing memories, the sweet old days where we used to just enjoy our game and just love what we do. You know, when you talk of uh, this stadium, the Kantirwa Stadium, any happy memories for you? Many happy memories. In 2004, I created national record here. In the first time, I created my national record here, and my husband Ranjit Maheshwari, he created the national record by clearing 17.30 meters in the same ground here in Kantirawa. So this is our second home, and we are like the lucky stadium for us. Well, there you are, emotions, memories, the pole vault and the triple jump. You're watching the triple jump for women. And your husband held the national record, did well at the Asian level Yes. in the triple jump. Yeah, he is a Commonwealth Games bronze medalist in 2010 Commonwealth Games, and he was ranked fifth in the world on that time 2010. And he was a Asian champion though, and he has won Asian championship title thrice. So. Whenever we come to the stadium, and it's the cherishing moment for us, and we can remember our own days. You know, today with so much of media coverage, with so much of television, the new number of newspapers have gone up. Earlier there were 6 newspapers. Today there are a dozen newspapers. We're looking at the triple jump again, which is now into its final stages. You just mentioned world number 5 at the triple jump, and how many people today realize, because Yeah. today we talk of the Neeraj Chopra, the Avinash Exactly. Sables. Exactly. So world number As such as like from my days to now till now, it is like tremendous exposure to the athletes. They have many channels, the social media. Even if they come they top in the state meets. They are so much. The media is so much, and the athletes get so much of opportunities. The sponsorship and the corporate has come up. They are doing tremendously good job. They get so much of foreign exposure. When we come to see a national championship here, we can see many of the foreign coaches here, the athletes here. The total scenario has changed totally. So it's happy to see that we are moving to the next level. That's why we can see those days we get an Asian medal is a big thing. Nowadays it's like a national championship. We get so much. We have crossed the 100 medals this time in the Asian Games. We are this way we progress. Definitely the next Olympics we can get many more Neeraj Chopras and Sindhus. you just mentioned about not only Indian coaches but foreign coaches here. Arnia Garcia, who won the 110 meters gold medal at the Olympic Games, and he beat a top field. Yeah. He beat 3 Americans, Terence Trammell, Mike Creer, and Alan Johnson, and he beat the great Colin Jackson.
So for him to be present here, there's a long Exactly. jumper. There's a long jumper. Yeah, we should be very happy and proud that such a great coaches are coming and training our Indians, and we are extremely talented. Only thing we were lacking was the techniques and the strength level and the latest training. Now we are exposed to many things with the foreign exposure. Definitely we'll be rocking in coming days. Did your parents tell you, Sureka, why are you taking to sports athletics? You should be studying well. Definitely, but my parents didn't. My parents were with my passion. I always wanted, and they were with me. My family was my big support, and earlier my parents, now my husband, my children. That's why I'm still in this field. When you look at a national championship next week or about 8-10 days, we look at a presentation, Kumari, offering the ladies presentation for the triple jump for women. to the distance of 50.10 meters. The silver is backed by Neetika Verma of Uttar Pradesh with a distance of 51.21 An amazing event, the triple jump. Well, every event, Sureka, whether it's the 100, whether it's the 1500 meters, whether it's the 10,000 meters, And the uh, winner in discus throw women is that's the presentation of the discus throw, correction, and not the triple jump, because the triple jump just got over. Or is it on? 52 Uh, meters. so every event has its own intricacies, and the beauty of athletics, track and field, is that all 44 events, in fact now there are 45 with the mixed relay, each event has got its own intricacies. Yes, so it's a lovely actually. Athletics is the mother of sport, and the main thing is like it's not only like to win, it's overall fitness and the passion you have and the health, everything. We are like a sport family, like we are very much passionate about sports, so athletics is everything for us. Khyati Vakharia took over from you, did she, or there was someone else who took over in the pole vault from you? It was Rosie Meena who created the new national record last year in the same Open Nationals by clearing 4.21 meters. But there was Khyati Vakharia in Yeah, the pole vault. she was. We both were a good competitors though, and she had represented India in few indoor competitions in the US. And she is, in spite of being a doctor by profession, she was very good at pole vault, and she had a passion of doing sports. So she managed to do both academics as well as sport. Which is what my question is, because a very unique case of her, a doctor being active in the pole vault. She's very active on Facebook, I know that, with me. Yeah. And Damini Gowda, the swimmer from Swimmer. Bangalore. Yeah. And so there you are. It's been wonderful chatting with you, Sureka. I'm sure you'll join us in the Combox. For giving me this opportunity. Thanks a lot. So there you are, the day 3 of the 62nd National Open Athletic comes to an end. We'll join you for live action tomorrow from the